I got a call from Vikram Bhatt and that was for 1920. He didn't even ask me for an audition. He said, I believe in you. I just want you to be a part of the film. This is the story. मुझे वो डिफरेंस पता ही नहीं था बिकॉज मैं शुरू से ही ऐसे करती थी जैसे दिस इज़ एक्साइटिंग व्हाई नॉट गिव माई 100%. आई रिमेंबर आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म कॉल्ड भूतनाथ. आई वॉज इन द जूनियर आर्टिस्ट. तेलुगु फिल्म एज अ लीड एक्ट्रेस वो कुछ डिफरेंट है मेरे लिए. वो वही एक्टिंग यहाँ है, वही एक्टिंग यहाँ है. इफ़ द डायरेक्टर इज़ नॉट हैप्पी तो हम फिर 100 रीटेक्स करते रहेंगे. इफ़ ही इज़ नॉट हैप्पी, इज़ नॉट हैप्पी. जितना आप एज एन एक्टर आप दे सकते हो किसी भी कैरेक्टर को, उतना देना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर ड्यूटी. Beginning में I did face a little problem of making people believe that it's okay to have a young producer on board and a girl. Confidence वो बहुत important है. आप कितना भी prep करके जाओ, if you are unsure or a little bit in doubt now, it just shows. Not everybody thinks like me. Not everybody wants to appreciate a film because it is made. Not everybody wants to see आमिर खान. जितना आप बच्चों को या किसी को बोलोगे नहीं ये मत करो, वो करने वाले हैं. OTT is giving them that liberty that okay you choose to watch it. If you like it, okay एक दो और एपिसोड देख लो. But you are exposed to it now. Yeah, it's done. It's over. हाय विका, वेलकम टू सूत्रधार, हमारा एक नया चैनल जिसको हम सिनेमा को सेलिब्रेट करने के लिए हमने ये शुरुआत की है. आप अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताइए, अपने अर्ली करियर में किस तरीके से यू स्टार्टेड योर करियर. इन एवरीबडी नोज यू बाय द वे, बट स्टिल वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम पर्सपेक्टिव कि कहाँ से शुरुआत हुई एक्टिंग की. I think very early in my life I kind of decided what I wanted to do. एंड एट 4 years of age मुझे याद है मैं पेरेंट्स के पास जाके बोलती थी मुझे कोरियोग्राफर बनना है, मुझे परफॉर्मेंसेस करने हैं. विच इज़ वाई एट दैट एज आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑन स्टेज विद अ लॉट ऑफ डांसर्स एंड ऑल म्यूजिकल्स एंड ऑल ऑफ दैट आई यूज्ड टू डू. आई थिंक एट अराउंड 7 व्हेन आई वाज 7 किसी ने मुझे एक शो पे डांस करते हुए स्पॉट किया और मेरे डैड से पूछा कि आप इसको एक्टिंग में ट्राई क्यों नहीं करवाते, क्योंकि एक्सप्रेशंस अच्छे देती है, पीपल माइट लाइक वॉचिंग हर एक्ट. और डैड ऑब्वियसली क्योंकि कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, नो बडी इज फ्रॉम द इंडस्ट्री, सो ही एंडेड अप सेइंग कि हाँ कुछ होगा तो बताना. ऑब्वियसली डिडंट टेक हिम सीरियसली. एंड नेक्स्ट डे दैट पर्सन कॉल्ड एंड उन्होंने कहा कि अच्छा आपकी बेटी दिखती कैसी है. एंड माई डैड वाज लाइक अपनी बेटी सबको ही अच्छी लगेगी, ये क्या सवाल है. एंड दैट पर्सन सेड नहीं मतलब उसके घुंघराले बाल है, क्या है एग्जैक्टली कैसी दिखती है. सो देन पापा ऑब्वियसली बहुत ही प्यार से डिस्क्राइब किया मुझे. एंड देन आई वॉज कॉल्ड फॉर अ फोटो शूट विच वॉज लाइक एन एड फॉर अ बैंक जो सचिन पिलगांवकर जी और सुप्रिया जी के साथ था. एंड फॉर अस इट वॉज अ वेरी बिग डील बिकॉज तभी उन्होंने नच बलिए जीता था एंड लाइक super popular faces, so हमने उनको काफ़ी सालों से देखा था. And I remember being on that shoot and seeing how humble they are, seeing how much they love their job. Even though they must have done these kind of photo shoots like zillion times in their lives, they were still doing it as if it's their first time. And they made me so comfortable at the end of the day. And with all of that I realized कि ये लोग जो कर रहे हैं मुझे ये करना है. And I remember that evening itself I told my father कि this is what I want to do in life. No more running a dance school. At the age of 4? At the age of 7. This was at the age of 7. Okay. And I said no more running a dance school because my dream was creating a dance school and being a choreographer. Correct. I said no, my dreams have changed now. Now I want to do acting. Nobody knew what it even means because coming to production houses, showing pictures, ये सब हमें पता ही नहीं था कि ये प्रोसेस होता है. सो लेटर ऑन वी रिमेंबर स्पीकिंग टू द सेम फोटोग्राफर उस एड के जो थे, उन्होंने ही हमें बताया कि ऐसे पोर्टफोलियो बनाना होता है, यू हैव टू गिव इट टू द प्रोडक्शन, दे विल कॉल यू फॉर ऑडिशंस एंड दैट्स हाउ द प्रोसेस गोज ऑन. एंड माई पेरेंट्स ऑफ कोर्स बीइंग एज इनोसेंट एज आई वॉज, क्योंकि कुछ भी नहीं पता था, हमने बस उनको बोला कि ठीक है तो इस एड के पैसे वैसे मत दो, बस फ़ोटोज़ खींच लो, हम दे देंगे हर जगह. And then the whole struggle of sending out pictures and looking for auditions and all of that started. And I think जो usually जो यहाँ पे youngsters करते हैं अलग सिटी से आके, वो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए किया.
And I remember there were so many days where I was sitting in the car and they would go to some production, maybe Balaji or offices, and they'll come back and say, hey, chal raha hai kuch audition tere age group ka, chal. And then I would go out and give that audition and come back. And this process went on, and I kept doing episodics and small roles and all of that for 2 years or so. And then Balika happened. I was auditioning for it, I remember, with 300 other girls. We did not expect कि ये होगा. Nobody expected. I think even the makers did not expect कि ये show इतना बड़ा होगा, क्योंकि new channel, everything was new. And the story itself demanded the characters to be young only for 80 episodes. वो 80 से 515 हो गया लोगों के प्यार की वजह से, and it just changed my life. और आपकी एज के साथ वो शो भी बढ़ता चला गया. Absolutely. मतलब पहला ऐसा शो हमने देखा जहाँ पे एक्ट्रेस की एज बढ़ रही है, उसके हिसाब से वो शो बढ़ रहा है. True. नहीं तो मतलब that's the beauty of that show. So उस पर्टिकुलर टाइम में द एज ऑफ 7, बिकॉज 7 साल के बच्चे को मैच्योरिटी तो आप मतलब वो तो खेलने की उम्र है, लेकिन उस समय हाउ डिड यू मैनेज योर acting career and your studies that time, because that's a lot the of people actually want to know things like this, but for me it was very easy because dialogues ratta मार की इतना आदत हो गया था that my brain kind of started functioning pretty fast. So studies में I became even better after I started अच्छा acting. मतलब रट्टा मारने की आदत आपको वहाँ से आई. And it worked. मतलब for example बालिका में जो dialogues होते थे, it was like वो राजस्थानी touch के साथ, not of course राजस्थानी भाषा but हिंदी, बट उसमें भी आपको वो एक्सेंट लाना है हल्का सा, क्योंकि मैं तो मुंबई में पली बड़ी हूँ, मेरी हिंदी तो पूछो ही मत. सो फ्रॉम देयर टू ट्राइंग टू गेट द डायलॉग्स राइट, उसमें माई ब्रेन काइंड ऑफ स्टार्टेड टू रियलाइज कि देयर इज अ लॉट आई कैन डू. करेक्ट. और वो स्टडीज़ में बहुत काम किया, एंड आई यूज्ड टू गो टू माई स्कूल फर्स्ट एंड देन गो फॉर माई शूट्स. एंड जैसे मैं सबको यही कहती हूँ कि जैसे लोग खेलने कूदने भाग जाते हैं स्कूल के बाद, मैं वैसे शूट करने भाग जाती थी. फॉर मी इट वॉज एब्सोल्युटली थ्रिलिंग टू बी ऑन अ सेट, गेट माई हेयर मेकअप डन, get dressed in that whole घाघरा and all of that and just have fun. I was having fun. मुझे बालिका वधू के जब मैं लास्ट वीक में थी तब तो मुझे टीआरपी का मतलब पता चला. तब तो मुझे पता चला कि ओके ऐसे रेट भी करते हैं लोग, ऐसा भी होता है. मुझे पता ही नहीं था. इट वाज जस्ट मी हैविंग फन ऑन सेट्स एंड या जस्ट गोइंग ऑल आउट. So उस समय I mean there are a bunch of actors in Balika Vadhu, then that particular time उन सारे एक्टर्स के साथ धीरे धीरे मेच्योरिटी आपकी डेफिनेटली मतलब आई मीन स्टिल यू आर यंग, बट उस ज़माने में बिकॉज जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे थे उन एक्टर्स के साथ आपका अनुभव कैसा था, और क्या आपको ऐसा कुछ एग्जॉर्बिडेंट सीखने को मिला एज एन एक्टर दैट टाइम विद सच ग्रेट कास्ट दैट टाइम? I mean, I think I've been very lucky that I got to work with all of them so early in my life. शायद अभी मैं ऐसे लोगों के साथ काम करती तो मेरा माइंडसेट बहुत एक पर्सपेक्टिव के थ्रू ही होता, बट तब मैं इतनी ओपन थी टू रिसीव वॉट एवर आई वॉज गेटिंग एंड वॉट एवर आई वॉज ऑफर्ड दैट एवरीथिंग वॉज जस्ट एक्साइटमेंट. करेक्ट. आई रिमेंबर जब सुरेखा जी कोई भी टेक करती थी जिसमें मेरी ज़रूरत नहीं थी उस सीन में, मैं फिर भी मॉनिटर पे जस्ट बैठती थी जस्ट टू वॉच हर परफॉर्म, जस्ट बी हर सेल्फ. And the way she used to transform when action used to happen. I think ये सारी चीज़ें जो आज when I can say very proudly that my directors are proud of me for doing those things, I think it comes from there. Because at that age I remember Anup Soni ji used to sit and have conversations with everybody and not even once made me feel like I cannot be a part of it because I'm young. I was made to feel that I can contribute to conversations. I was made to feel that I can add value to the scenes by improvisations. Correct. The respect I got, I think that happens only when you have such amazing people around you. Like I said, I've been very lucky. I think not just them. I think after Balika, when I started doing, small characters in films and all of that, I remember one of my film called Morning Walk, which was with Anupam Kher sir. On that set, I was just so happy at all points because Anupam ji ke sath shoot karna was one of course my dreams. And by the end I remember my parents asking him कि हम acting school भेजें क्या इसे, because we don't know what to do now. And he said नहीं, just let her be. She's the best part is that she's loving it and she's having fun. Let her be. She doesn't need to learn anything. वो set पे उसका जो training हो रहा है, nothing can beat that. Correct.
he could have chosen the other way. He could have said, of course, bhejo mere paas, and he could have done all of that, but he did not choose to. And that showed how kind and amazing he is as a person. So I got to learn so many things so early, which of course I get this a lot, that I'm way more mature than I was supposed to be at my age, or I grew up too early and all of that. But I think that's a blessing. I saved myself from so much that people go through nowadays in the name of anxiety and depression. Correct. I've been very lucky and blessed, of course. I think these are my Dada Dadi's prayers that have, kind of shown. But at that early understanding that you want to choose your path is not easy. I remember after Balika Vadhu, when I was doing Sasural Simar Ka, even after that we took a break. My parents kind of sat me down and said कि अब 12th है तेरा, अब लोग यूजुअली डिसाइड करते हैं कौन सी स्ट्रीम में जाना है. हियर्स योर चांस, टेक योर टाइम, डू नॉट गो फॉर एनी शूट्स, अभी तू ब्रेक ले ले, सी इफ़ यू इवन लाइक एक्टिंग, सी इफ़ यू इवन लाइक टू बी इन द इंडस्ट्री. And that 1 year or so, I remember feeling every day of my life कि I want to go back on set. I can't live without the idea of cinema. And everything after that, whatever I did, even for my education or the screenplay writing that I mentioned, everything that I kept doing after that was revolving around cinema. Correct. And that just, it wasn't something that my parents kind of feed in my brain much early. It wasn't because of that, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था how to do it, what to do, or any of it, right? So with that innocence and with that excitement, it all started, but it definitely ended up being something that I can't live without. And I'm so proud of it, because now when I hear scripts, now when I, add my improvisation as an actor to the script, or add some kind of value to a project, it makes me feel that nobody of my age is capable of doing what I can offer. Absolutely. And that brings in so much confidence, that brings in so much of awareness also, because it's a fact I cannot take this for granted. I know for a fact that people would kill or die to live a life that I live, which is privileged, comfortable, and with so many opportunities. It's definitely a privilege, and I understand that, so I do not take any minute for granted, and it is important. Yeah, that is important. Secondly, even as you mentioned कि कोई mathematics नहीं है industry की, there is no मतलब logic नहीं है. Sometimes you don't come across logics in life. उसी तरीके से शायद industry भी है. So Sasural Simar Ka happened, and you became a female lead in that, and after that, जो transition period जो आपने बोला as an actor, कि कब आपको लगा that is the turning point in your life where वो बच्ची से वो टीवी की लीड से लेकर फीमेल लीड एज एन एक्टर इन द फिल्म, there's a huge difference, craft का ही difference है. True. So how did that happen, and how, you managed to cope up those things as an actor? So I would like to start a little before that. Before Balika, and when I was doing the episodics, I never even realized that acting is different for a main lead or a character actor. Correct. मुझे वो difference पता ही नहीं था, because मैं शुरू से ही ऐसे करती थी जैसे this is exciting, why not give my 100%. So I never even felt like I was playing a character, even when I was. I remember I was a part of this film called Bhootnath. I was in the junior artists. And of course my parents then got to know that I went as a junior artist, and they were like, no, this is not what you want to do. And obviously they changed the paths later. But when I went there, I was still very excited. Just to be there in the background was exciting for me. Correct. So my approach has not been कि ये प्लेटफॉर्म है या ये अपॉर्चुनिटी है तो इस हिसाब से आई हैव टू गिव, बट इट्स ऑलवेज बिन लाइक जो भी आ रहा है ना, लेट मी जस्ट पुट इन माई 100%. एंड दैट हेल्प्ड मी डू दैट ट्रांजिशन ईजीली, बिकॉज आई नेवर फेल्ट कि ससुराल सिमर का के बाद जो मैं लीप ले रही हूँ इन अ तेलुगु फिल्म एज अ लीड एक्ट्रेस, वो कुछ डिफरेंट है मेरे लिए. वो वही एक्टिंग यहाँ है, वही एक्टिंग यहाँ है. ऑफकोर्स द कैरेक्टर अप्रोच, द आइडिया ऑफ द स्क्रिप्ट, द कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग इज़ 100% बहुत ही अलग, बट माई अप्रोच स्टिल रिमेन द सेम, बिकॉज आई वॉन्टेड टू लर्न, आई वॉन्टेड टू नो हाउ
a Telugu film would be made, because I used to watch these films and I love watching the dubbed versions जहाँ लोग बस उड़ रहे हैं. I love all of it. So for me, I wanted to be a part of something like that which excites me, and वो साउथ इंडियन गानों में जो डांस होता है ये सब मुझे बड़ा पसंद है. And that was one of my biggest reasons to be there. Of course, I'm not doing any of such films. All the films that I do are like super character oriented and performance oriented. So it's a different story altogether. But my excitement still remains the same, is what I'm trying to say. करेक्ट. सो जैसे बोलते हैं ना, मोटा आदमी चाहे कितना ही पतला हो जाए हमेशा मोटा ही रहता है. मन से मोटा ही रहता है. उसी तरीके से एक बच्ची जो वो जो डांसर थॉट प्रोसेस जो उसका बचपन से है, वही शायद इंक्लिनेशन आज True. भी आपका उसी टुवर्ड्स है. 100%. एक अभिनेता के रूप में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या लगती है? कैरेक्टर या फिर डायरेक्टर? See, at the end of the day, it's an actor's job to deliver what the director is expecting out of you. At the end of the day, if the director is not happy, तो हम फिर 100 retakes करते रहेंगे. If he's not happy, he's not happy. करेक्ट. बट जितना आप एज एन एक्टर आप दे सकते हो किसी भी कैरेक्टर को, उतना देना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर ड्यूटी. यू डेफिनेटली हैव टू समटाइम्स थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. फॉर अ पर्सन लाइक मी, मुझे ऐसा लगता था कि जो भी मेरे पास स्क्रिप्ट आती है उसके करने के 10 तरीके होते हैं और उसी डायलॉग को बोलने के 50 और तरीके होंगे. और उस प्रोसेस में मुझे ऐसा लगता था कि this is how much I can offer. But I remember going to this set for Bloody Ishq with Vikram Bhatt sir, and I realized that he was never happy with any of that. And the reason he was never happy, because he realized that I can give more, and I was trying to be in my comfort zone. So there were times where I used to, मुझे ऐसा लगता था कि चाहिए क्या उन्हें, like समझ ही नहीं आता था. But then when I went beyond that कंफर्ट जोन एंड दैट मेरे दिमाग में जो मैंने एक बॉर्डर बनाई हुई थी, आई रियलाइज दैट आई लुक लाइक अ डिफरेंट पर्सन, एंड दैट इज़ वॉट ही वॉन्टेड. He wanted me to look like the character. Correct. So then there are directors who kind of give that clarity to you कि हमें ये चाहिए and do this. There are directors like Vikram sir who will let you be as crazy as possible as the actor, and you give all in, and if there are some fine tunings, he'll help you do that. Then there are people like Bhatt Saab who would, really tell exactly what is needed, and he runs through emotions. Like his direction is all about emotions and how much you can actually feel it to portray it on camera, and that's a very different school altogether. I have also met directors who would completely act out every little thing, and that kind of, as an actor, becomes a little annoying because hello, I'm the actor, let me act. But at the end of the day, that's their technique, and I have worked with those directors, and those films have worked. People have liked it, so no complaints. But that definitely becomes a little copy paste, मुझे बस वही करना है जो वो करके दिखा रहे हैं, and that as an actor doesn't allow you to go beyond. And that has happened before, but now I think I've recently met a lot of directors who just let me explore, let me be with the character for months, where I can just prepare myself, come out with something that I myself don't expect out of myself. So ये जब वो आप beyond जाते हो ना, where you just completely surrender to the script, is when the right thing kind of makes sense. So how did your first film happened in Telugu? So I was being offered a lot of scripts even in Hindi and Marathi at that age. I was 15, I think, and I was offered all teenage characters, college going characters and all of that, and I realized that अगर films करनी ही है at the end of the day, why not do something that really touches your heart? Like I had options, but there was this one script which really touched my heart, which was this Telugu script, and the film is Uyyala Jampala. New director. The hero was also new because he was an AD before that, and because he was auditioning people for that character, the director thought tu hi kar le. That's how he became a hero. Oh. The producer was a second timer. He did just one film before that. So everybody kind of fresh, and for a person like me, I thought कि थोड़ा experience होगा तो better होगा, because I come from a lot of experience.
So I thought ki movies mein, let's see how it goes. I don't know, let me just trust the process because the story is good, the story is sweet. Let me just try. That's how the first film happened. After the film was made, Nagarjuna sir took it over and he said, now I'm presenting it. So every interview, it was like him praising us, telling how amazing the story is and everything. And that kind of made the film what it is today. And it was the biggest hit of the year, and nobody was expecting a new fresh team to come up with something so sweet. And it's not even like overly dramatic film or the typical south conventional films that we see. It's none of that. It's just so beautiful and simple that simplicity worked. Nobody expected that. And I remember Nagarjuna sir saying this multiple times during all the interviews that there's something fresh about this film and that is what will work. And it worked. And after that, there was no looking back, because once Nagarjuna sir kept saying in interviews that she's a brilliant actor, तो फिर तो of course people will come to me with different scripts, and I did get a lot of scripts, but all my life I've been very choosy. I have been very, aware of the fact that there's a lot I can offer. मुझ में वो understanding बहुत पहले से है that what I can deliver as an actor is unique, and I want to keep it exclusive, which is why I kind of did not go for a lot of scripts that I was offered, a lot of so-called big films and all of that. It was a conscious choice to not do any of that and just choose characters that mean something. And for example, there was a film Ikkadki Potavu Chinnavada, which was 3 girls and 1 guy, and I chose to do the character which was the most important, not because the hero ends up with her. That wasn't the logic. The logic was that her soul travels in the other two. It was like a cameo, but that made so much sense, because even now after Uyala Jampala, if people talk about any of my film, it's Ikkadki Potavu Chinnavada, jabki wo tha technically just a cameo. Correct. So I've been very careful when it comes to really choosing and picking scripts, and which is why like a lot of actresses in Telugu, this really happens that every year they have like zillions of releases and all that party is going on of multiple heroes trying to work with them and all of that. But I never chose to be the furniture in the film, and I'm very proud of it. That's correct. And even जब आपकी पहली फिल्म जब आपको मिली, तो उस समय आप बॉम्बे में थे. The producers knew you as an actor. क्या उन्होंने पीछे background उनको मालूम था? Absolutely. And Balika Vadhu was so popular not just in our country but around the world that it was also dubbed in multiple languages. So in Telugu also they have watched Balika. So I remember जब Uyala Jampala का पहला teaser आया था, they did mention introducing Anandi as so they kind of they loved Anandi, and I think even now वो repeat पे चलता रहता है. They still watch it and they still pay money and go watch my film. Really? So yeah, it's amazing. So नहीं, जैसे Mythbusters बहुत है ना, अगर हिंदी इंडस्ट्री में पूछें, so particular साउथ के प्रोड्यूसर्स यहाँ आते हैं और यहाँ के कोऑर्डिनेटर्स so called. Now I'll ask you later on the casting process and everything. So ये वो जो यहाँ पे होते हैं ना कि भाई कुछ प्रोड्यूसर्स आए हैं, लड़कियाँ यहाँ ऑडिशन दे रही हैं. So thankfully they knew you before, and that's how it worked out. So the transition, actor, then producer. So that was actually my favorite transition. At the age of 4, at the age of 7, you decided that you'll become an actor. Yeah. At the age of 14, you wanted to become a lead. Yeah. When you become lead at a very, very young age, then how come this producer Avika Gaur happened? So during my teenage years, I did a lot of courses which were revolving editing and writing and all of that. So at one point, yes, I definitely want to direct a film. I definitely want to explore a script that I write and go all out and do all of it. That's the plan. But when it comes to direction, because it is, I think, the most difficult job, I wanted to learn everything around it, which is why I started with editing, and I can like properly, professionally edit films. I started writing the screenplay writing course from New York Film Academy. I started doing all these things to understand how comfortable it would be when I direct. And of course, one of those things is production.
because of course making the film is a difficult job, but making sure that it sells, making sure that the business part of it is taken care of is important. Absolutely. And I remember 21 when I asked my father the first time कि करूँ क्या. He's like, your call. All this while you have decided for yourself, why do you need to ask me? I said, because when it comes to money, I might need some help. He said, of course I'll help. When you need me, I'll be there. But try doing it, Of your own. you know, of your own. And I remember speaking to a lot of people to, you know, gather a team, because at the beginning, it's एक दिमाग से नहीं होगा कुछ. We need a proper team to execute the whole thing. And I remember going up to people who had like 40 years of experience and all of that, and they were like, are you sure about this? I said, I think I am. I have a writer who's written something amazing. I want to make it, and why not? Beginning में I did face a little problem of making people believe that it's okay to have a young producer on board and a girl. That definitely was a problem in the beginning, but once people saw that it is possible and I know what I'm saying, then it was easy for me, of course. Then I kind of started to you know, hear more scripts, and then people, even I remember the writers that used to come up to me initially when I was thinking of starting the whole production part. They used to come up to me कि we want you as an actor, so now we'll go out and look for producers. I remember writers coming up to me and narrating the stories, और मुझे उनको जब वो बोलते थे कि okay, if you're okay with it, we'll go find a producer, is when I used to tell them that no, you don't need to, let me do this. And in the beginning, of course, I saw a lot of question marks, because ना तो मैं तेलुगु बोलती हूँ, ना मैं वहाँ पे पली बड़ी हूँ कि मैं लोगों को जानूँ and all of that. So of course a lot of like lack of resources was what people were worried about in the beginning. But then everything just fell in place, and I remember my first film being released in the theaters, and that feeling is so different, because you're not just an actor, you contributed, you're really like sweat, money, everything, you know. As a it filmmaker, is obviously. yeah, these and things- that makes you feel so proud, because I remember one of my lightmen came up to me during the schedule and said ki, madam, I've worked in this industry for like 30 years and I've never eaten the kind of food you offer. Little thing, but it made me, my father, all of us so happy that we were almost in tears, because we see these, you know, people work so hard, and it was our time to kind of give back. And it was something that really mattered, like, you know, the pay disparity that obviously is there in the industry for all the per day people, and it's just sad sometimes, but you know, we as a production kind of took care of these things. My makeup artists were paid as close to as possible with the spot guys, and these little things do matter. And for us, you know, me and my father, I remember a lot of pre-production meetings that we had. We spoke about these things of how we can make our set more kind. Simple. That was the agenda of the meeting, how to make it more kind. And you know, when I saw the vibe on the set, nobody you know, would mind giving you 1 extra hour of their time, because it's all positive and nice. And I think that kind of helped, and that intention of doing right and being inclusive when you're growing with the entire team is what helped us kind of continue to do this. And my production, it's my 3rd movie now which is under post production, and 2 of them have released, and it's all definitely happening very early in my life, because I never thought at 26 I'll be sitting and saying I'm a producer of 3D films. It's a dream. It's still a dream. It feels like a dream. But the fact that it has happened, the fact that it has happened with so much of ease, because everybody has been so amazing and cooperative on the set, all the actors, everybody, everything has happened so smoothly with me, that I realized that this thing I'll continue. For a while, I don't mind doing this. And I remember going to the meetings with the OTT platforms and trying to figure out the deals and all of it. And I remember coming out of one of the meetings with clarity of about the money and everything. And my father is like, "Sab kar liya tune?" I said, "हाँ, मैंने सब कर लिया." And he was so proud. And just to see all of that just makes my heart really happy. So, you know, stated as a producer. Yeah. So, जब आप producer का एक बहुत important पहलू होता है
to understand the script. Of course. एंड उससे मेरा रिलेट करता है, बहुत कम लोग जानते हैं कि आपने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से एक कंप्लीट स्क्रीन प्ले का आपने कोर्स भी किया है बिफोर यू बिकेम द प्रोड्यूसर. जी. इनफैक्ट बिफोर यू got into the main lead cinema Right. kind of stuff. So how did that happen? And elaborate, because why, it is very important factor to understand in our industry, that why education is important. Because I'll elaborate a little bit more, because we got the status of industry, but you see, a banker needs to do a finance management, and an engineer needs to do blah blah blah. Our industry is the only industry जो कोई भी मुंह उठा के यहाँ पे आ जाता है. That's the worst part, and that is the problem industry is facing. Demand and supply. So वो जो education part है, first of all, it's such a beautiful thing to understand कि यार before you become the actor and producer, you were, since you have already did so much of work before, but why New York Film Academy screenplay writing, and after that why you think that education is so important for an industry? I think I might not agree with education being very important, because I have seen a lot of people around me who definitely come from NSDs and FTIIs, and I've seen all of that really being glorified and in a very good way. But I've also seen people like me who have not studied acting and still can do really good job. So I come from the non-educated in actors perspective background, which kind of makes me believe that on-set experience can give you the right kind of knowledge that you need. And if you want, if you're open to learning something, you can do anything in life, is what I believe in. I know so many people turning out to be amazing actors because they were assistant directors before. So they've been around directors, they've been around writers to understand every little bit of it before becoming an actor. That kind of education is something that I completely understand, and I remember telling so many of my directors that if I am, free and if I am sitting at home, I would not want to do that. I'd rather come on your set and see what you're doing. I want to be there. So on-set experience is something that I count as education for myself, and I would want everybody who wants to act to go on a set once. Assist in whatever capacity. If you like makeup, please assist in makeup. Any kind of capacity that you can offer. That is one step of you understanding how difficult the job is, because a lot of people take this for granted. Actor hai, हाँ कर लेगा, खड़े तो रहना, lines ही तो बोलने. It's not that easy. Correct. You're right. It's not that easy to be in front of camera, to do your job, especially when 70-80 people are looking at you, and there are times when you feel conscious because there are some scenes that you're not very comfortable with, or any of it. But at the end of the day, it's your job, and you do it, and you give your 100%. So those times are, important for a new person to witness, because you then realize that, are you even meant for something like this? Do you have the courage to do something like this? Because this needs a lot of courage. Correct. To, promote your film, go for like 20 interviews, but to make all those interviews seem different and interesting is your job. Why will I watch the same interview again and again? Just the host is different. That doesn't make sense. Correct. So it's the actor's job to convince you that you need to go watch this film because this is different about it. And you have to do that 20 different ways. Absolutely. So it's not just about being on set and performing, but also this. People also want to see what that actor's personality is, how they are in real, how they can inspire you in real. Like for me, I watch so many actors that inspire me, of course on screen, but off screen, there are very few that I kind of feel that I want to be a human like this, or I want to be as smart as this, I want to be as witty as this person. And those are the things you realize that they have worked hard for. They were not like this when they entered. Yeah, so that's the process that kind of finally teaches you that what you're supposed to be. But the beginning or the basic would be to learn, be it education, be it on set. That's completely your choice. I know a very dear friend of mine is assisting a makeup artist right now, wants to become an actor. And I think that is one of the best ways, because you're the
closest to the actor. You're the closest, on set to everybody, and you see every little thing. You learn what you should do, and you also learn what you're not supposed to do. Correct. You're right. And I think that's the mindset I have, because at the end of the day, whenever I go on set, all I keep doing is observe. I am absolutely at all points just looking at people, learning, because at the end of the day, you learn little things about somebody which will end up making a character out of you, which will help you improvise in one of the characters that you're doing. Something somewhere will help. And I think how much ever I keep saying about learning, experiencing and all of that, at the end of the day, only if you're humble, only if you are living in gratitude, all of this will make sense. Because if you see, at 10 I could have felt that okay, I'm arrived. At 15 again I got a chance when I started doing films that I could have felt that okay, I'm arrived. But thanks to my parents, who really kind of showed me the mirror at all points, and also people around me who kind of made sure I'm grounded. So the support that you receive also will kind of influence where you are heading at, because there are so many people that started their careers with me. I don't see them anywhere. There are so many people who started their careers after me and are at a different level right now, but I know at some day something is not going to work because the approach is wrong. Absolutely. There are so many things like that which, when we start talking, I realize that, I've been so aware and so careful about these things that it has helped me. So jitna I support the idea of educating yourself and being better and all of that, I really respect people who are thinking कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम acting कर लेंगे. I think that also requires courage. क्योंकि there are people like that जो, like you said, मुंह उठा के चले आते हैं in this city of dreams and end up doing almost nothing. But अगर उनमें से किसी एक का भी approach सही निकला ना, to kind of कि नहीं यार कुछ और नहीं हो रहा है, यही सही, let me just give in that hard work and dedication that is required, we'll end up seeing a Shah Rukh Khan there. Yeah. Right. And I think it's just that matter of, being that person who is allowing कि let me just surrender to this industry, and that is what I have done. चाहे फिर मुझे उसके लिए writing के लिए course करना पड़े, चाहे मुझे उसके लिए फिर production करना पड़े. I'm not saying production, whole idea of production is only about always getting a lot of money. You lose out on a lot of money, and I need to be ready for it. That's the biggest misconceptions people have. Yeah, and as an actor, I need to be ready for it, because as an actor, मैंने जितने भी पैसे कमाए हैं, हो सकता है मेरे एक production movie में चले जाए. You never know. I need to be ready for it, and that is why I say that this industry needs people who really have a lot of courage. Otherwise, it's not an easy job. So that's what I was talking about. Not education as academic education. Yeah, just the understanding of. Understanding. For an example, we working in a Hindi industry. और आज ज़्यादातर एक्टर्स जो मास कम्युनिकेशन करके या जो भी करके यहाँ पे पहुँचते हैं, एक्टिंग कोर्स करके पहुँचते हैं, they don't know how to read Hindi, they don't know how to speak Hindi. आपको रोमन में स्क्रीन प्ले चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें हैं. सो एजुकेटिंग का ये है कि बिकॉज एज यू सेड दैट यू आर द ग्रेट एग्जाम्पल एट दिस एज टू कीप लर्निंग. This is the process. This is very similar to chartered accountant course. Yeah. You have to keep improvising yourself, improve yourself. In this industry, कई लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई चलो ये तो बचपन में उनको हो गया, अब क्या करने की जरूरत है, अब धीरे धीरे बिकॉज एवरीबडी नोज, तो इनके लिए ठीक है, हमारे लिए बड़ी मुश्किल है क्योंकि हम बाहर से आते हैं. That's what my point is, that it is not easy for you at all, because since nobody told you to do that those courses or those but why you are trying to enhance your particular skill set. So वो स्किल सेट में स्क्रीन प्ले वाला आपका जो कोर्स रहा, वो आपने कैसे टाइम निकाला उसके अंदर, और क्यों दूसरों को भी निकालना चाहिए? आई थिंक मेरे लिए वो पूरा प्रोसेस स्क्रीन प्ले लिखने का शुरू हुआ था व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग फ्रेंड्स. ओके. आई वॉच दैट शो एंड आई लेटर रियलाइज्ड कि यार 6 लोग हैं, कैसे स्टोरी क्या चल क्या रहा है, हाउ आर दे एबल टू make sure that I don't leave my seat until I watch the entire thing.
like how is it so gripping? And that was my curiosity, and that's how it started ki ye, this is all screenplay, these are just the characters, Correct. these are just the actors given the script, they are performing, but why is it so interesting to me, why am I liking it so much? That is how it started, that is how I realized कि हर एक चीज़ का स्क्रीन प्ले का पैटर्न भी बहुत अलग होता है, बिकॉज फिक्शन ऑफ कोर्स आप स्टोरीज़ लिखते हो, आप शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते हो, फिल्में लिखते हो, उनका पूरा प्रोसेस अलग है. एंड व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश एंड हिंदी का डिफरेंस, वहाँ पे भी फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पे इंटरवल वाला सीन नहीं, यहाँ पे यू नीड अ बैंग ऑन इंटरवल पॉइंट, एंड देयर आर जिलियन थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज. सो मैंने ये सब पूरा रिसर्च करना शुरू किया, दैट ये मुझे बहुत इंटरेस्ट दे रहा था कि ये सब सीखना है लाइफ में. सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग मुझे बहुत सीखना ज़रूरी लग रहा था, क्योंकि मेरे पास बहुत आइडियाज़ आ रहे थे. मेरे पास, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस स्टोरी में अगर, ये मूवी में अगर ऐसा होता तो और मज़ा आता, ये वो. एंड देन आई रियलाइज कि खुद करो ना, लिखो, see how much brains you have. Correct. You're And right. I kind of gave that challenge to myself. And जब मैंने लिखना शुरू किया, I realized that it's not easy. I realized that there are days when you will be filled with ideas, you pen them down, and then there are days where you will be stuck with an idea and you will not know where to go after that. And that has happened with me. There are so many stories that have come to my mind, concepts which are just stuck since years. I'm unable to like get a next thing out of it, you know. And as a person who's so creative and occupied in the head when it comes to acting, मुझे ऐसा लगा कि फ्री टाइम में अगर मुझे कुछ करना है तो ये क्यों नहीं. And this will, at the end of the day, if I become a director, at the end of the day, whenever I become a producer, these were my thoughts कि ये सारी चीज़ें आएंगी काम. अगर मुझे कल उठ के एक राइटर बोलता है कि ये मैं 2 दिन में नहीं कर सकता, rather than putting that pressure कि नहीं मेरे को 2 दिन में चाहिए, I would rather understand कि नहीं हो सकता है 2 दिन में. And that I will only understand when I am, I place myself there. Correct, you're right. The reason for me to learn editing was exactly this. I wanted to understand कि आप स्क्रिप्ट पे कुछ लिख सकते हो, करने पे शूट कुछ कर सकते हो, but if your edit is wrong, your film is not right. Yeah. Edit is very important, and it's not just editing, even the post production where it comes to color grading, everything, हर चीज़ मैटर करती है. and I wanted to learn everything because सीखना है. My approach was just excitement, and I'm so glad that तब मेरे दिमाग में और कुछ मतलब नहीं था. I was not trying to gain anything out of it, because अब मुझे रियलाइज़ होता है कि वो इनोसेंस में, वो एक्साइटमेंट में जो मैंने सीखा है ना, ये बहुत काम आता है. Like, when I'm seeing a film of my own production, and when I see there is some edit that can be crisp or something with the edit, I just look at my editor and I just say कि यहाँ पे ये कर सकते हैं क्या, like a different kind of dissolve will work here. And he does it and he's like, yeah, it works. And it's always a suggestion. I never tell people what to do, because obviously so many things, you'll end up telling what is supposed to be done, but I don't do that. So my approach is different. And when I do that, people also like working with me, because then it just is easy. It's brainstorming, of sorts, कि हम सब मिलके कुछ बना रहे हैं. And that kind of information is very important. And screenplay writing तो is become like a thing that I do whenever I'm free, and I absolutely love it. And Berlin Film Festival में एक जो festival हुआ था, I don't even remember the year, I was the youngest ever to be nominated for original screenplay for a short film that me and my friend Manish Rai Singhan made. The film was also nominated as best film there. So we were just like, ये मस्ती में हम कर रहे हैं, लेकिन it's just working. Yeah, 100%. And even now, whenever I meet a director, meet a writer, it's just so exciting to see the process, because हर किसी का process बहुत अलग है. I remember doing a film called Net, which was one of the OTT release. I remember going on that set after 1 week of narration, so I did not have the time to prep or anything. And even during the narration, I remember telling my director, okay, stop, don't tell me what happens next. I did not know the climax until we actually shot the climax. And I'm so glad, because sometimes, in a concept like a thriller where, you do not want to reveal things, and as an actor it also helps, क्योंकि आपको पता है कि अब आपको अगर end पता है, तो you will act in a certain way that, it kind of will compromise a little, acting wise. And I wanted to make my job easier as an actor, so I told him, don't tell me the आगे का screenplay, let me just do it.
And when I went on the set and when we were shooting that, I realized कि अच्छा हुआ मैंने ये किया. These kind of calls sometimes ना, it's important It works. because Yeah. it is all gut feeling. ये कोई planned, ये कोई सिखाया नहीं है कि ऐसी script में आप climax मत पूछो. क्यों नहीं पूछो? Of course पूछो. You're an actor. At the end of the day, you should be convinced. But it was my gut feeling कि ये नहीं पूछना है. मुझे इसका screenplay पूरा नहीं जानना है. And I went ahead with it and it worked. So मेरा screenplay के साथ तो I've had some really exciting incidents where at one point one director came up to me and said we are making a remake of a Tamil film and we are literally doing like a copy paste. So we actually copied the frames, we actually copied the head movements of the actor, we did all of it. Really? And at all points I kept feeling कि अगर ये इसका स्क्रीन पे थोड़ा ऐसा करता ना मज़ा आ जाता. I watched that film now and I realized that he tried to do exactly that in the edit. He tried to manage that. The film worked. Okay. But at the end of the day, the thought that I had with the screenplay, it showed in the edit. And I was so happy because he understood what I was feeling and there was no other person on the set to tell him, okay, now do this. Correct. But वो मैंने reach out किया, वो reach out हुआ. अच्छा. Because I have that writing experience and because I can contribute, they kind of thought कि करके देखते हैं and it worked. So as an actor, sometimes these kind of suggestions that you give काम कर जाते हैं and it's amazing to see that because at the end of the day, it's your project, it's your baby. And everybody, the director is also going to feel that, the producer is also going to feel that. But as an actor, what more can you do is the point. It's not always just about money. It's also about your satisfaction and the feeling of contentment कि किया, सही किया. Right. And not always the films that you really work hard for will work. Har din is not going to be sunny and I'm like, as an actor, I think everybody should be prepared. Because even before Pathaan, nobody wanted to watch anything Shah Rukh Khan was doing. So there are times like these where you need to be aware कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, but that doesn't mean it's going to pay back. Like we need to be prepared. And when I started to do this screenplay and the homework, I would say, when I started to do all this, I realized that it's not just the actor's film. The writer has to be giving his 100%. The editor has to give his 100%. वरना वो फिल्म वो नहीं बनेगी. जैसा हम विजन हमारा है नहीं होगा जब तक सब 100% नहीं देंगे. एंड आई थिंक ये सब सीखना मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये सब सीखने के बाद एज एन एक्टर आई कुड गिव मोर. आई रियलाइज कि जितना मैं पहले दिल से काम करती थी उससे मैं कहीं ज़्यादा फोकस से काम कर सकती हूँ और मेरा जो रिस्पेक्ट थी फॉर एवरीबडी इन द यूनिट हैज़ इंक्रीज्ड. आई आफ्टर स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन आई थिंक आई हैव बिकम अ बेटर एक्टर बिकॉज आई रियली थिंक आई कैन अंडरस्टैंड वॉट goes behind the camera and when it comes to selling and all of that. I understand the business, I understand the creative side. So for an actor, I think it's important for all of you to kind of learn something like screenplay writing, not just that. You could go for editing, you could go for just one FCP course is enough. It just gives you a little idea of how things work and it's important. I remember बालिका के सेट पे जब मैं बैठी रहती थी, मैं अपने कैमरा मैन जो संजय मेमाने सर उनको मैं बोलती थी कि ये लाइट यहाँ पे क्यों है, ये हम थर्मोकोल क्यों यूज़ कर रहे हैं. आई यूज़ टू आस्क क्वेश्चंस एंड इट माइट इरिटेट पीपल बट आई वाज लविंग इट. आई वांटेड टू नो एवरी लिटिल थिंग. एट दैट एज आई रिमेंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन था एंड संजय मेमाने सर वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज वर्क. इवन इन दैट इंपॉर्टेंट सीन आई वॉज द फोकस पुलर. ही मेड मी सिट देयर, तू कर, आई ट्रस्ट यू, तू कर. एंड at that age all I kept thinking was कि ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है. अब जाके पता चलता है कि ये सब ना समझ आता है क्योंकि now when I'm told to be on a mark as an actor, I know why it is important because the focus puller will end up doing some mistake and we'll have to do it again. So I rather not do that. I stay there on my mark. So as an actor, all these things help. So what are for the new, there are a lot of people will watch, they admire your work and as an actor they see you. So what are some fundamental acting techniques you see? How do you do it? There are some techniques you prepare or? Yeah, there are some things that I do. Okay.
वन ऑफ विच बीइंग कि अगर मैंने ये कैरेक्टर चुना है, इफ़ आई हैव सेड अ येस टू इट, देन आई ट्रस्ट इट. एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि अगर मेरा कैरेक्टर मेंटली ठीक नहीं है और वो किसी का मर्डर कर रहा है, दैट डजंट मीन आई एंड अप डूइंग दैट इन माई लाइफ बिकॉज आई थिंक इट इज़ जस्टिफाइड. What I'm trying to say is that उस कैरेक्टर के लिए at that point it should be 100% justified, तभी वो real लगेगा. These are the things I give a lot of thought to, and not just that, I also believe that a lot of actors do work on their voice modulation and body language and all of that. And मेरे साथ हर बार ऐसा हुआ है कि जो भी मैंने कैरेक्टर चूज़ किया है, एक्शन से लेके कट के बीच में आई ट्राई माई बेस्ट टू लिव दैट कैरेक्टर. फिर वो बॉडी लैंग्वेज, फिर वो सब कुछ अपने आप हो जाता है. एज एन एक्टर और एज समबडी हु वुड वांट टू you know, be in this industry, one thing you should know is that you do not have to look good at all points. A lot of people I see will be like in their proper looks even when the husband is dying. Matlab, these are the things that I have never believed in. There are films, complete films that I have done without makeup. There are complete films that I have done with just one costume because the story demands that and all of that. I think trusting the process is the most important thing, and that takes practice. मैंने भी कोई एक दिन में, मतलब इवन बालिका, जब मेरे आई रिमेंबर जब लुक टेस्ट हो रहा था, जब 2 चोटी डाली गई थी, आई रिमेंबर टेलिंग माई मदर कि बाल खुले होने चाहिए, ये 2 चोटी क्या है. एंड आई रियलाइज कि वो कैरेक्टर वो नहीं बाल खुले रखेगा, वो बच्ची है, वो 2 चोटी ही रखेगी. लाइक यू नो, दीज आर द थिंग्स दैट एक्टर्स काइंड ऑफ टेंड टू गिव देयर इनपुट्स एंड आइडियाज टू, बट you should just leave it to the makers, the directors, and you know, people who are taking care of the looks and all, because we actors, we like looking good and we take opportunities like promotions to look good, but I think we should stop there. We cannot be telling people what to do on sets because that's their job, and I think letting people do their job is one of the most important thing an actor should learn. What is the importance of voice modulation in acting? जब मैं बहुत छोटी थी, ऑफ कोर्स बालिका के बाद, जब मैं बहुत छोटी थी, आप अभी भी छोटी ही हो. जब मैं बहुत नहीं, मतलब बहुत और छोटी थी. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज 15-16, मैंने कार्नाटिक म्यूज़िक सीखना शुरू किया, एंड इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी. ओके, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट. एंड आफ्टर अ पॉइंट माई टीचर वाज लाइक कि ओके नाउ, एंड शुरू में तो ऑफकोर्स बेसिक्स होता है ना, थोड़ी ना सीधा ही गाना शुरू करोगे आप. सही बात है. तो बेसिक्स से, कार्नाटिक म्यूजिक से, एंड माई ओनली रीज़न टू लर्न दैट वॉज टू हेल्प माई सेल्फ विथ वॉइस मॉड्यूलेशन, बिकॉज आपको हाँ ये बेसिक्स आना ज़रूरी है. दैट डजंट मीन कि मैंने हॉर्स राइडिंग, ये वो कराटे वो सब सीखा है. दैट्स नॉट व्हाट आई मीन कि बेसिक्स मतलब हर चीज़ में, बट समथिंग दैट विल हेल्प मी इवन व्हेन आई एम you know on a stage with a mic talking, I would understand what my pitch should be and what my volume and speed should be. उतना understanding के लिए I thought music सीखना चाहिए. And at one point I remember my teacher, हम सीख रहे थे, and one point he's like, हाँ अच्छा चिल्लाया, अब गाओ. So there were so many experiences with my teacher that I realized कि singing तो हम और ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं. सही बात है. बेसिक हो गया, ये इतना एक्टिंग के लिए इनफ है, बस कर लेते हैं वरना लोग गाली देंगे. तो एक बार धर्म जी को मैंने पूछा था कि तो ऐसी कभी बात हो रही थी रिदम के बारे में कि एक एक्टर में पहले पुराने ज़माने में अगर आप देखो, दिलीप कुमार साहब, अमित जी, धर्म जी, उनकी वॉक में एक स्टाइल होता था, उनका एक रिदम होता था. तो मैंने धर्म जी से एक बार पूछा कि आपके वॉक में इतना रिदम था, आपके डांस में रिदम क्यों नहीं था? तो धर्म जी ने बोला क्योंकि वॉक में इतना रिदम था कि मेरा दिमाग डांस में बहुत आगे चला जाता था और मैं उसको मैच नहीं कर पाता था. तो मैं म्यूजिक और रिदम के बीच में फंस जाता था, इसके लिए मैं वो मैच नहीं कर पाता था जैसे हमने बात की. सो रिदम इज सो इम्पोर्टेंट. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. एंड आई थिंक हर चीज़ में, इवन व्हेन यू नो हम एक कोई गाने का शूट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है हर गाने में डांस हो,
but even simplest things like turning around, flipping your hair, Correct. little things will need that side of you which understands कि ये क्यों काम करेगा, और ये छोटी चीज़, even one eye blink for that matter, it has to be timed well. अगर मैं रोमांटिक बात करते करते बस blink करती रहूँ, it won't make sense. But at one point, if I make an eye contact and if I just shift one eye to another and then make a blink, it will make sense. Yeah. So the little things also revolve around rhythm, Correct. and it's very technical. It is. Because it is not, that's the difference between the theatre acting and film acting. Of course. Film acting is absolutely a different ballgame. And for a person like me who has acted in films and all of this, मेरे को 15 साल almost ज़्यादा ही हो गए, but 15 साल हो गए. For a person like me, I cannot act on stage. I cannot do live performances, not because I forget my lines, but because I do not have the confidence to pull something off like that. Because for me, theatre acting is, it's another level of dedication and another level of control that you have over yourself. वो मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई है वो करने की. According to me, that's the most difficult thing. And vice versa. जितने भी थिएटर एक्टर्स हैं, they find very difficult to work front of the camera. Interesting. Because उसके दो reasons हैं. Because since I was in working with a lot of people in Delhi in repertory, and मैं देखता था. So अगर आप देखेंगे पीछे कि जितने भी एक्टर्स आप देखें उस ज़माने के, जिसमें आप विजय राज, दीपक डोबरियाल, के मेनन, and these kind of people, ये लोगों को कितना टाइम लगा फिल्म कैमरा की टेक्निक सीखने में. क्योंकि थिएटर में होता क्या है, थिएटर इज दिस, और आपको मुड़ना भी इतना ही है, चलना भी इतना ही है, आपके घुटने भी नहीं मुड़ने चाहिए, आपकी आवाज़ की वॉल्यूम भी उतनी होनी चाहिए. लेकिन जब वो फिल्म में आते हैं और उनको जब स्पॉट पकड़ना पड़ता है, मैं तो आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ. विजय भाई एक दिन मुझे बता रहे थे कि बस शुरू में मैं बॉम्बे आया, विजय राज क्वाइट अ नोन एक्टर, तो उन्होंने बताया कि मैं जब शुरू में बॉम्बे आया तो जब मेरा पहला शॉट लगा तो सामने कैमरामैन ने बोला बेबी को ठीक कर. तो वो थोड़ी देर तक सोचने लगे कि अच्छा ठीक है, कौन सी बेबी है यहाँ पे. तो थोड़ी देर बाद वापस किसी ने बोला अरे बेबी को ठीक कर यार. तो पूरा एक दिन उनको ये समझने में लगा कि यार ये कौन है बेबी. तो फाइनली उन्होंने जाके बड़े धीरे से पूछा, बिकॉज न्यू कमर थे और ज़्यादा पूछ नहीं सकते, तो उन्होंने पूछा सर ये बेबी कौन है. तो उसने बोला वो लाइट है छोटी यार जो तेरे पीछे लगी हुई है. सो ये जो टेक्निक्स का मामला है ना, एक एक्टर के लिए ये समझना भी बहुत ज़रूरी है. मार्किंग, आपने जैसा बोला ना कि आप टर्न कर रहे हो, आपके आंखों की मूवमेंट क्या है, बिकॉज कैमरा कैप्चर्स एवरीथिंग. So, and there are days, there are scenes where you're supposed to act even when your co-actor is not in front of you. So for the close-ups or anything else, there is no anybody there, but you're supposed to act as if there is somebody and make it look as convincing as possible. आप पुराने एक्टर्स को देखें जिनसे भी, because since we were doing master class, so we were talking to a lot of old actors. All the actors never used to sit in the vanities. अपना पार्ट करने के लिए वो सिर्फ प्रिपेयर नहीं करते थे. अपना पार्ट करने के बाद वो बाहर सेट पे दूसरे का पार्ट भी देखते थे, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन उनको देना होता था. तो शत्रु जी ने अगर दिया है तो अमित जी बैठ के देखते थे कि इसने कहाँ ख़त्म किया है. ये नहीं कि मैं अपना पार्ट आके कर दूंगा. सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इंटरैक्शन पार्ट. 100%. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग, कमिंग बैक टू द लैंग्वेज नाउ. ओके, आपसे पूछना बनता भी है, बिकॉज क्योंकि आपने शुरू में बताया कि मैं रट्टा मारती थी. सो जो तेलुगु वाला जो मामला है आपका, इतनी फिल्में आप जो कर रहे हैं, सो डू यू रिमेंबर और यू learn those lines, or you develop the language sense in you? So because it's been a while now, I understand the language completely. अब अगर मुझे कोई राइटर डायरेक्टर अप्रोच भी करते हैं और नरेशन भी देते हैं तो वो पूरा का पूरा तेलुगु में होता है. अच्छा. तो I understand the language completely, but I don't speak, and I think that's also my mental block. क्योंकि अगर मैंने थोड़ा बहुत बोलना आसपास में हेयर मेकअप के साथ और इन लोगों के साथ शुरू किया तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट. बट आई थिंक वो मेंटल ब्लॉक बन चुका है कि मुझे सोच के क्रिएट करना नहीं आता है एंड ऑल ऑफ दैट. आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ स्टॉपिंग मी. And even my interviews and everything that I do there for promoting my films, it's all in English and Hindi. Yeah, and when I'm supposed to promote things like say ki okay now watch this film is coming, I'll just ask my co-actor just tell me the line how to say it. He says it and I say it. So it's something that is just like a mental block, but I understand the language.
much. How about the set? On the set, my scripts are given to me a little early, like a day or two prior, and I tell all my ADs to, send me voice notes, because तेलंगाना AP वो हर accents भी अलग होते हैं, हर चीज़ थोड़ी अलग होती है. So to understand exactly आपको कौन सा tone चाहिए, to understand कहाँ पे pauses होने चाहिए, I always ask for audio notes. And I try to copy that as much as possible. But obviously, the voice modulation and the feeling and the emotion will definitely happen through me. And for that, I need to understand the language. So, Avika, what is your process before going on the sets? Just telling myself that I'm going to do good. Okay. I think that confidence वो बहुत important है. आप कितना भी prep करके जाओ, if you are unsure or a little bit in doubt now, it just shows. And I think just telling yourself that you'll figure this out and you'll do a good job, Correct. that is very important. I always start my day, even when I'm getting out for some meeting or something, I just tell myself that सब सही है. It's not that I really need this, but I'll do a good job at it. And I think that approach kind of makes it all easy. तो फिर अगर सेट पे जाके अगर 50 टेक हो रहे हैं कि कुछ नहीं जम पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, it's not stressful for you. It's like, okay, you're trying something different and you're trying and you'll keep trying. So I think that just encourages you to kind of keep giving. और वो तभी I think you can give and surrender so much when you are really satisfied with how your life is and how everything else is. So prioritizing, sorting things or issues in life become really important, and that's what you should finish and then go, I would say. Yeah. Because going on a set with any kind of stress it just show. And I think just telling yourself you'll do a good job and you're good at this always helps. So, industry has a lot of transition in past 25, 30 years, 40 years, 50 years. You are a product of evolution of TV also. Because, since you see in 2000, कौन बनेगा करोड़पति, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, and घर घर की कहानीज and everything, they've set up a structure जहाँ पे अब TV was not that that great, because there are a lot of OTTs and there are a lot of stuff, but उस पर्टिकुलर टाइम में जिस समय आपने बालिका वधू किया और उस समय जो टीवी का एवोल्यूशन हुआ, since you're working with OTT now and you have done television, so आपको बहुत बड़ा डिफरेंस OTT के आने से क्या लगता है in terms of as an actor, not as a producer or not because ठीक है, I mean you have been doing that stuff, but as an actor OTT पे काम करना और टीवी में काम करना और फिल्म में काम करना, how those things are different? Same है. My approach is always about how I can give my 100% to this character and a story. अब वो कहाँ आएगा is not my job. Okay. My job is to only go on a set and make sure that मैं एक्टिंग अच्छी करूँ, चाहे फिर वो टीवी ऑडियंस देख रही है, OTT ऑडियंस देख रही है, फिल्म ऑडियंस देख रही है, ऑडियंस देख रही है. So, Avika, since you have done TV as an actor, as a producer, as a writer, I'm talking as a whole, not as an actor. So, industry-wise, if you see कि ये पूरे evolution के बाद जब OTT का, evolution हुआ, अभी भी हो ही रहा है इंडस्ट्री में. So, what do you see कि क्यों बहुत लोग successful नहीं हो रहे हैं जो टीवी में थे बट वो OTT में नहीं हो पा रहे? उसका रीज़न आपको क्या लगता है? I think one of the biggest reason is कि the audience has definitely become smarter. They have the control of switching something on and turning it off एक सेकेंड में. They have a lot of control over कि हम अगर अगला एपिसोड नहीं देखेंगे उसके बाद का देख लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, दोनों साथ में देख लेंगे. सो ऑल ऑफ दैट, अगर आपने ऑडियंस को इतना कंट्रोल दिया है विच इज़ OTT, then it becomes a comfort zone. For me, if I have watched something, for example, like a Forrest Gump, I have watched it multiple times on OTTs and parents के साथ बैठ के, friends के साथ बैठ के, मैंने वो बहुत मज़े लिए हैं उस फिल्म के. But when a Lal Singh Chaddha came, for a person like me who really loves cinema, I love that film. मुझे हर चीज़ उस फिल्म के बारे में बहुत अच्छी लगी. I love the effort that they put in. I love the
songs, the music, the detailing of the background music. I love the cinematography. I love the film overall. But not everybody thinks like me. Not everybody wants to appreciate a film because it is made. Not everybody wants to see Amir Khan. Correct. There are people who love Amir Khan, but at the end of the day, if they are not convinced कि यार ये इसकी पंजाबी थोड़ी बहुत ही forced लग रही है, तो नहीं देखेंगे वो. Correct. And these are the things that went wrong with the Lal Singh Chadda. And to be very honest, एक फिल्म आई थी थग्स ऑफ हिंदुस्तान जो थिएटर में आई थी. उसमें अमिताभ बच्चन, आमिर खान, कटरीना, अवायर Prabhudeva doing the choreography, the music direction, everything was perfect. It still didn't work because people do not want anything which is, I wouldn't say a copy, but इतना भी ज़्यादा influence from some other industry like a Hollywood film कि हम यहाँ पे justify ना कर पाए और we are not sticking to the roots, which is why Telugu or all of those kind of You're right. Languages work because they stick to the roots. And I think for us to not think of the platform, चाहे वो OTT हो या थिएटर हो, that is very important. क्योंकि अगर वो एक mindset आ गया ना कि ये तो बस OTT audience के लिए है, ये बस OTT audience ही देखेगी, then we will try to end up giving them content that we think will work, which is not even working for theaters nowadays. Thugs of Hindustan बनी ही theater experience के लिए थी, बट वो नहीं गए लोग देखने के लिए. सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट वी एज पीपल हु आर इन फिल्म शुड डू इज स्टॉप थिंकिंग ऑफ ये कहाँ जा रहा है. ऑफकोर्स द बिजनेस पार्ट ऑफ इट विल मैटर, बट एज एंड व्हेन अ राइटर इज राइटिंग अ स्क्रिप्ट he should write it with that original, not original, but that the feeling that he had when he started thinking of it. Correct. वो अगर वहाँ पे वो authenticity रहेगी ना, then everything will work. चाहे वो OTT हो. मेरी एक वेब सीरीज आई थी called वधुवो, which was originally Indu in Bengali and we remade it in Telugu, and finally जो हमारा वाला वर्जन था वो हिंदी में, मराठी में, हर लैंग्वेज में गया, इवन इन बंगाली. वो एक रीमेक थी और वो बहुत चली. एंड मुझे भी यही डाउट था कि रीमेक ही तो है, लोगों को एक्सपोजर तो है ही, ओरिजिनल तो देखा ही है. मैंने खुद ओरिजिनल यूट्यूब पे हिंदी वर्जन देखा है एक्सेसिबल सब कुछ. वाई विल दे स्टिल वॉच इट? बट फिर भी हॉटस्टार काइंड ऑफ मेड दैट चॉइस एंड टू मेक इट विथ मल्टीपल लैंग्वेजेस का ऑप्शन, एंड इट डिड वेरी वेल बिकॉज पीपल वॉन्ट टू सी वॉट इज द डिफरेंस दैट we did in this particular script. है तो रीमेक, स्टोरी तो वही है, सस्पेंस खुलेगा तो वही खुलेगा, बट हाउ वी मेड इट डिफरेंट इज व्हाट गॉट इन दैट क्यूरियोसिटी. एंड आई वुड से कि अगर वो एक ओरिजिनल होती तो शायद इतनी नहीं चल पाती, क्योंकि लोगों को जानना था कि वो ओरिजिनल से क्या अलग है, इसलिए लोगों ने देखा. सो व्हेन इट comes to OTT or the exposure that OTT gives you and the pros and cons of it, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने जो इतनी सारी फिल्में, कोरियन ड्रामाज, ये सब जो हमने इतना सब कुछ एज ऑडियंस कंज्यूम करना शुरू किया है, it's going to be so challenging for the makers to live up to that, because now if you open any OTT, there is a Hindi recommendation, there is another recommendation, there is Telugu, everything at one this thing section. So it's a difficult job for you to go at that level and compete, and it's definitely crazy competition. But also because there are so many OTTs, because there are so many platforms to offer, there are a lot of films and lot of content that's going to be made. ये रुकने वाला नहीं है. And I think it same goes for TV. हम कितना भी बोल लें कि ऑडियंस कम हो गई है बिकॉज OTT आ गया है, नाउ एवरीथिंग इज़ ऑन अंडर कंट्रोल, ये वो, बट वो TV ऑडियंस आज भी, मेरे घर पे आज भी लोगों को वो अनुपमा देखना है. वो TV ऑडियंस वो रहने वाली है. इट्स जस्ट दैट कि वो वंस इन अ वाइल एक बालिका वधू आएगा, वंस इन अ वाइल एक क्योंकि सास भी कभी बहुत ही आएगा, एंड वी डेफिनेटली फील दैट इस पर्टिकुलर शो ने कुछ अलग कर दिखाया है. बट एट द एंड ऑफ द डे लोगों को भी आफ्टर सम पॉइंट, एक जब वो जनरेशन चेंज हो रही है, TV पर आ रही है, उन्हें भी कुछ नया चाहिए. एंड आई थिंक दैट इज़ द शिफ्ट दैट इज़ हैपनिंग. एंड especially when it comes to movies nowadays, I think people are going so wrong with a lot of things, and I think the credit or the blame will go to the makers, because उन्हें
अगर a film or a product like Thugs of Hindustan being the biggest example going wrong, then we really need to see what we are doing. Because वो उसमें अगर उसकी प्रमोशंस की भी बात करें तो वो प्रमोट भी अच्छा किया गया था. तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मार्केटिंग ऑल्सो, इट्स ऑल्सो अबाउट आप कैसे उसको फाइनली लोगों तक पहुंचा रहे हो. येस, मार्केटिंग डज हेल्प, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या लोगों को देखनी है वो चीज़? क्या पीपल आर इंटरेस्टेड? नाउ डेज पीपल आर टॉकिंग अबाउट पुष्पा बिकॉज they loved the first one, they want to watch the second one in spite of they don't even know कि किस लेवल पे होगी, क्या डिटेल्स होगी, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, उन्हें बस देखनी है. आई थिंक द रीज़न, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न बीइंग देम स्टिकिंग टू देयर रूट्स, एंड आई थिंक दैट is what we will, as in industry Hindi, will have to start doing. Because जहाँ पे a film like Lapata Ladies is working because we are trying to reach the roots, we are trying to show this is how a part of India is and we should acknowledge it. So, and even Vaduvu, the reason it worked is because हमने एक तेलुगु wedding family और उसका पूरा scenario, the rituals, हमने वो इतना रूट्स तेलुगु का दिखाया कि वो बंगाली वाला लोगों ने कंपेयर किया ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत अलग था, वो बंगाली रिचुअल्स थे. बराबर. एंड दैट काइंड ऑफ वर्क, दैट ऑथेंटिसिटी वर्क. सो आई थिंक स्टिकिंग टू दैट ऑथेंटिसिटी नो मैटर व्हाट प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू वर्क. censorship is also one problem because if you see TV, क्योंकि आज भी घरों में टीवी देखा जाता है because there is a family thing, they see. फिल्म्स में ऑब्वियसली सेंसर सर्टिफिकेशन है तो उसमें ए है, यू है, यूए है. ओटीटी के अंदर देयर आर फ्यू थिंग्स जो ऑल्सो बहुत ही नॉन सेंसर है. आप कुछ भी दिखा सकते हैं. आज बच्चों के पास 13-14 साल के बच्चों के पास मोबाइल है. आज वो 18 वाला मामला तो है नहीं. अगर आपने जियो सिनेमा डाउनलोड किया हुआ है, नेटफ्लिक्स है, तो आप देखोगे अर्बन आपके जो कंटेंट है. सो आपको लगता है कि ओटीटी पे भी सेंसरशिप होनी चाहिए? आई बिलीव कि जितना आप बच्चों को या किसी को बोलोगे ना ये मत करो, वो करने वाले हैं. I think OTT is giving them that liberty that okay, you choose to watch it, if you like it, okay, एक दो और एपिसोड देख लो, but you're exposed to it now. Yeah, it's correct. done, it's over. Correct. Now there is no excitement or the thrill of हाँ पेरेंट्स से छुप के हम ये देखने वाले हैं. That's done. So I think that हमने जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एज में दे दी ना बच्चों को, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग दैट वी कुड हैव डन. They will not now feel कि ये एक मूवी आ रही है, ये मुझे देखनी है क्योंकि मुझे ये देखना अलाउड नहीं है. वो थॉट चला जाएगा. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी देयर चॉइस नाउ टू सी इट. हाँ ठीक है, बिग डील, गो मूव अहेड, वॉच समथिंग एल्स और वॉच समथिंग दैट विल रियली मेक some difference in their life. But then that's the upbringing, and then the conversation will go around how sensible the kid is and how important it is for the kid to even consume OTTs right now. वो पूरा conversation ही अलग है, क्योंकि अगर आपने वो password दिया हुआ है, then be ready for it. Then be ready that you have exposed your kid to something like this. But at the end of the day, it's, I think वो excitement अगर एक बार चला गया ना कि हमने देख लिया है, क्या ही है, कुछ नहीं है, then I think people can move ahead and not think about all this. Because वो जो वो आप सस्पेंस में बनाए रखोगे ना किसी को कि उनको पता नहीं है क्या है, you're not allowed to do this, there are zillion other ways to do it. They go to schools, they meet their friends, they will figure ways out. So rather than stopping them or controlling them, it's their way of exploring life, and it's okay. I suggest it's okay, let them do what they want to, because at the end of the day, if they have to become a good human ना, कोई कितना भी crime करके वो good human at the end of the day बनेगा. और and if they have to become a bad, वो कितना भी अच्छा बच्चा होगा, they'll become bad. So you it's let them live. I think that is how it should be. हाँ, वो पेरेंटहुड भी आजकल ऐसी हो गई है ना कि अगर बेटा, 2 बच्चे हैं घर के अंदर, बेटा और बेटी, तो बेटा बनेगा विराट कोहली, बेटी बनेगी ऐश्वर्या राय. सबके दिल में ख्वाहिश तो यही है लोगों को, बट वो रियलिटी कुछ और है. सो इतना इम्पोज करने लग गए बच्चों को ना. दैट इज ऑल्सो समथिंग. See, when it comes to theatre, वहाँ पे सेंसरशिप और उसका कंट्रोल होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स are taking their family out, spending that money,
गोइंग आउट प्लानिंग अ थिंग, बिकॉज इट्स लाइक ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड लोग प्लान करते हैं ये करना, और उसमें दे डोंट वांट टू सी समथिंग दैट दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ वॉचिंग विद देयर फैमिली. दैट मेक्स सेंस बिकॉज उन्हें पता है कि ओके दिस इज ए सर्टिफिकेट, हमें नहीं लेके जाना है. दैट मेक्स सेंस. Correct. यहाँ पे वैसे ही बच्चा अपने फ़ोन पे देखने वाला है, देखने दो. वो उसकी वो चुल खत्म हो जाएगी. सो आपने जो बोला ना थिएटर वाला मामला, बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड कि नाउ थिएटर एक्सपीरियंस करने के लिए भी ना एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली आज की डेट में थिएटर नहीं जा पाती है. करेक्ट. And that is the problem because you know that is what industry need to see, even the government need to see कि जो थिएटर है वो एक डाइंग एक प्रोफेशन बनता जा रहा है लोगों के लिए. आज AI आ चुका है, OTT आ चुके हैं, तो एक आज 5,000 रुपये अगर अपनी फैमिली के लिए आप जाओगे एक फिल्म देखने के लिए तो पॉसिबल नहीं है बहुत लोगों के एंड लिए. यू नो द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट सिमिलर थिंग इज़ यही चीज़ अगर आप किसी तेलुगु ऑडियंस से बात करोगे ना, वो बोलेंगे कि अगर हमारे फेवरेट स्टार की या हमारे फेवरेट एक्टर की मूवी आई है हम 50 बार थिएटर जाके देखेंगे. दे वॉन्ट टू स्पेंड दैट मनी बिकॉज वो ना बचा के रखते हैं कि इसकी मूवी आने वाली है और हम जाके थिएटर में देखेंगे. और वहाँ पे आई वुडेंट से थैंकफुली बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल बिजनेस, बट वहाँ पे वो सिंगल स्क्रीन्स वाला सिनेरियो Correct. काफ़ी ज़्यादा है, विच इज़ वाई दे एंड अप मेकिंग मोर मनी Correct. बिकॉज वो बार बार देख पाते हैं, वो अफोर्ड कर पाते हैं. सो Correct. डेफिनेटली फॉर हिंदी इट हैज़ नॉट बिन वेरी नाइस. इवन व्हेन इट कम्स टू माई ओन फिल्म 1920, जितना हिंदी में कमाया इट इज़ अ बिग हिट एंड आई एम वेरी हैप्पी, बट जितना हिंदी में कमाया उतना ही ऑलमोस्ट उतना ही या उससे थोड़ा कम तेलुगु में कमाया. एंड टेक्निकली दैट शुडंट हैव बीन द केस बिकॉज तेलुगु में तो डब्ड है. दे You're कुड right. हैव बीन लेसर देयर एंड वे मोर हियर एंड ऑल ऑफ दैट, बट द मैथ वर्क दैट वे बिकॉज द सिंगल स्क्रीन थिएटर्स आर देयर मोर एंड पीपल वुड वांट टू गो अगेन एंड वॉच ऑल ऑफ इट. एंड ये बिजनेस, ये आई थिंक दिस इज समथिंग दैट people will have to learn with time, I Yes. say, because this will take time for a lot of heads there to kind of understand what is going wrong. Right now if मैं खुद कितने टाइम बाद अब I think I'm planning to go to a theater and watch a movie, and like I say planning to go to a theater and watch a movie, क्योंकि वो टाइम निकालना, उतना पैसा स्पेंड करना, वो मुझे भी अगर सोचना पड़ रहा है तो then there are so many people who would want to think. So that is one thing that will definitely affect a lot of filmmakers because nobody will dare to kind of choose that platform, क्योंकि OTT ज़्यादा कन्वीनियंट है, ईजी है, हर किसी के घर में कोई तो OTT है, वही अप्रोच कर लो, वही बेटर है. These are the easy way outs of course. और आई जाएगी थोड़े टाइम में, एक महीने बाद आई जाएगी, क्या करने जाएंगे. Exactly. दूसरा एक और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है Exactly, इसी के ऊपर कि जब आप OTT के बारे में बात करते हैं या थिएटर के बारे में बात करते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंटेंट देखने क्या जा रहे हैं. जैसा आपने बोला कि आप कंटेंट क्या देखने जा रहे हो ना, यू नो आज अगर कंट्रोल्ड है, आज सिनारियो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो है ना, इट हैज़ बीन कंट्रोल्ड बाय 10-15 पीपल ऑल टुगेदर. आई मीन दैट इज़ द ह्यूज पार्ट बिकॉज यू नो आज सारे एक्टर्स प्रोड्यूसर्स बन चुके हैं. Because उनको भी पता है नहीं आप तो मतलब इट इज़ अ ग्रेट थिंग बिकॉज यू नो बाय द एंड ऑफ इट यू हैव टू डू इट. यू नो एक्टर्स आज वो नहीं कर पा रहे हैं अगर उनको प्राइसिंग कम रखनी है. आज अगर अक्षय कुमार 4 फिल्में रखते हैं और अपनी फिल्म की प्राइस कम कर सकते हैं क्योंकि वो एक्टर हैं इसलिए कर सकते हैं. सो एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स नाउ. यू नो 3 से 4 दिन की वो है सिल्वर जुबली तो देखे हुए हमें ज़माना हो गया ना कि अभी ऐसा तो होता नहीं कि भाई आपने सिल्वर जुबली लगी हुई है कोई. खैर कमिंग बैक टू योर, उसके पहले OTT पे है ना, उससे पहले आ जाती है. मतलब आदमी आजकल पेशेंट हो गया है कि अच्छा ये रिलीज हो रही है, अच्छा पुष्पा तो आ ही जाएगी, हमें क्या करना है जाके. मतलब दैट इज हाउ इट इज. Yeah, unless they are offering something surely different. Like for example, I was very excited to watch Kantara in theater. क्योंकि मैंने इतना सुना था ना उसके बारे में, उसकी मेकिंग के बारे में, वही डायरेक्टर है, वही राइटर है, वही एक्टर है, मुझे जानना था कि क्या है ये. एंड आई थिंक ऐसे मूवीज़ बहुत रेयर होते हैं जो आपको इतना एक्साइट करे कि नहीं यार ये तो थिएटर में देखनी है. वो आजकल आई थिंक इट्स बिकम काफ़ी कम हो गया है वो. बिकॉज वो थिएटर वाला फील आजकल क्रिकेट में आ जा रहा है ना, लोगों को मिल जा रहा है कि अभी विराट कोहली अगली बॉल पे क्या करने वाले हैं, उस पर ज़्यादा एक्साइटमेंट है. वर्ल्ड कप पे ज़्यादा एक्साइटमेंट है. एनीवेज कमिंग बैक टू अगेन ऑन द बेसिक, व्हाट इज द यू नो what you have learned, what is the difference between acting and overacting? Oh wow.
So the minute you are trying to pretend or be something that is not convincing to you is overacting. अगर आपने खुद को कन्विंस कर लिया है कि ये मुझे इस मोमेंट में ये फील हो रहा है, दैट्स एक्टिंग अकॉर्डिंग टू मी. तो ज़्यादातर लोग इसीलिए कन्विंस्ड होते हैं कि वो बराबर कर रहे हैं, इसके लिए ओवर एक्टिंग क्योंकि वो भी कन्विंस्ड है, वो भी कन्विंस्ड है. आजकल तो ऐसा भी ज़माना आ गया है कि एक्टर आते हैं और एक्टर आके बोलते हैं कि सर थोड़ा कम करूं क्या. ओह माय गॉड. हाँ, मतलब इमोशन थोड़ा ना मैंने बढ़ा दिया है. तो अगर आप बोलते हो तो मैं I think for not just people like that, but everybody who's wanting to get it right, the first thing and the best thing you can do is sit with your writer and director and understand कि चाहिए क्या. करेक्ट. Once you have that clarity of what level, because see, I have done a 1920 which was like a very dramatic horror film which also had dialogues बहुत ही भारी भरकम because 1920 की conversation है, and everything related it according to me. I wouldn't speak like that today. I wouldn't react like that today. मैं करूँगी ही नहीं ऐसा, मैं क्यों करूँ? It's not convincing for me today. But for the story, but for the character, it made sense in 1920. And to make it look convincing right now, Correct. all I did was sit with the directors, the makers and everybody and understand that this is the kind of drama they want. This is the kind of extreme wide open eyes they want. Details. I had to ask them every little detail of चाहिए क्या and what will work for the script, and then when you approach it you also have that clarity. आपको पता है कि एक benchmark है आपके दिमाग में कि ये क्रॉस नहीं करना है, और अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो then you go ask कि कम करना है क्या. So then asking that question कम करना है क्या will make sense. Yeah, correct. You're right. But otherwise I think the best way or the best idea would be to just go and ask as many as like पूछो यार सवाल, कोई मना नहीं करेगा. Because I've seen a lot of people feel कि यार अभी या तो शर्म कि अब इतने सवाल नहीं करने, या तो दे फील कि हम डिस्टर्ब ना करें डायरेक्टर को, या तो दे फील कि इतना इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दिया है अब इसमें काम चला लेते हैं. Ask. I always tell people ask questions and not just to your. I remember asking a lot of questions to all my co-actors. मैंने इतने सवाल किए हैं. I remember I used to do scenes with Surekha ma'am during Balika, and I used to every scene के every shot के बाद I used to go and ask her इसमें कुछ change करना है क्या, कुछ करूँ क्या, इसमें ऐसा करूँगी. She used to be like नहीं सही है यही कर जो है. But if you have somebody to kind of guide you there, ask. Correct. एंड ज़रूरी नहीं है कि वो एक सीजनड एक्टर ही होना चाहिए. आस्क टू न्यू पीपल, दे विल हैव सम डिफरेंट अप्रोच. आई हैव वर्कड विद सो मेनी पीपल हु आर मे बी 1 year older. So Avika, how do you define talent? So there are a lot of kinds of talents. I think one biggest talent that I believe one should have is the talent of really being nice to people, and it's the basic. Yeah. But that is one thing that I wish a lot of people had. काश इतनी दुनिया हंकी डोरी होती जैसा आपने बोला है. Be nice to people. Kash. But I think when it comes to acting, a lot of people do say that because I've started working early, so I'm hearing this a lot, that I've been talented. It's a God gift. It's something that I don't have to work hard for. It's very easy because I'm just talented. I'm just talented. Like that's what people say. But I think सिर्फ talent से कुछ नहीं होता है. One thing, because when there is no hard work combined with it now, you're just wasting your talent then. I also believe that when it comes to talent, when it comes to especially acting, we are really choosing our inspirations गलत तरीके से. बिकॉज अगर हम एक्टिंग टैलेंट की बात करें तो देर आर सो मैनी एक्टर्स लाइक अनुपम खेर जी, के मेनन जी. वी शुड लुक अप टू देम. वी आर लुकिंग अप टू स्टार्स. दे आर स्टार्स. And for actors it is very important to understand where they want to be. For example, there's been a very wonderful manager since many years with me. She asked me once that Avika, for your placement we need to understand whether you want to become an actor or a star. You tell us very clearly. And I didn't have an answer because मुझे भी वो जो रसल वाला मैंने गाना किया, मुझे भी वो करने में बड़ा मज़ा आया. एंड दैट इज़ नॉट समथिंग व्हाट एवरी एक्टर वुड डू, बट
star at the end of the day would do something like this. So that's a very different category. So once I realized that I don't have an answer for that is when I understood कि मतलब मेरे को दोनों करना है. When I say that मुझे वो fight sequences वहाँ जहाँ पे 10 लोग उड़ते हैं बड़ा पसंद है, which clearly means that it is not the actor in me talking, but a fan or somebody who has seen all of this and wants to do stuff like that and wants to become a star is talking. So I particularly believe that हमें जो इंस्पायर करना चाहिए हमें उन चीज़ों को जल्दी आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड दैट इज़ वेयर यूल अंडरस्टैंड द टैलेंट यू हैव, दैट इज़ व्हेन यूल अंडरस्टैंड व्हाट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ. बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर एक्टर बहुत अच्छा टैलेंटेड एक्टर है. बहुत एक्टर्स मैं जानती हूँ पर्सनली भी जिन्हें एक्टिंग का ए नहीं आता, बट द वे दे वर्क हार्ड एंड दे ग्रूम देमसेल्व्स एंड मेक श्योर दैट दे आर इंस्पायरिंग इनफ, वो इनफ हो जाता है फिर उनके लिए. एंड दैट इज़ ऑल्सो अ टैलेंट टू सेल दैट पर्सनैलिटी. एक्टिंग का ए नहीं आता लेकिन जी आता है उनको हर चीज़ मतलब एवरीथिंग एल्स दे आर सो गुड एट. So I think at the end of the day it all comes down to really choosing what talent you want to trigger in yourself. Right. And I still don't have an answer what I want to be. Even now my manager keeps asking me ki bata to, like where do we work hard. I said I have no idea. Like you just mentioned, he happened to mention about the music video and then he said एक दिन किसी दिन music video भी आ जाएगा आपका गाया हुआ. I didn't have an answer because I don't want to say no because you never say never, but I'm not sure if that is the right path, but I'm also not sure if I wouldn't do that. So I like this confusion and for me my talent is always going to be all over the place and confused. नहीं मैंने क्यों आपसे टैलेंट के बारे में पूछा, बिकॉज यू नो सिंस आई वाज टॉकिंग टू यू एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे बात की हैं अभी तक, तो मुझे यू नो कर्नाटका संगीत से लेके डांस से लेके यू नो वॉइस मॉड्यूलेशन से लेके स्क्रीन प्ले से लेके एक्टिंग से लेके, क्योंकि क्या होता है कि उसके लिए थोड़ा टैलेंट की आवश्यकता होती है. अगर नहीं होगा तो मतलब वही वाली बात है कि मतलब आप गधे को कितना भी घस के बनाओगे तो वो खच्चर बनेगा और घोड़ा पैदा होता है. सो घोड़े के अंदर टैलेंट है घोड़ा बनने का. सो दैट इज़ द होल थिंग. बट हाउ डू यू सी सिंस यू आर अ डेस्टिनी चाइल्ड, एज आई से दैट बहुत लोग शायद जैसा आपने बोला 5000 ऑडिशंस के बाद आपको बालिका वधू मिला, क्योंकि डेस्टिनी होती है कई लोगों की होती है. यू नो जुगल हंसराज की भी रही होगी, कुमार गौरव की भी रही होगी, संजय दत्त की भी रही होगी. बट वो डेस्टिनी होने के बाद हाउ डू यू प्लान योर डेस्टिनेशन? यू नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बिकॉज यू नो डेस्टिनी होना अच्छी बात है, हो गया, बट उसके बाद ये सब आपने जो किया, यू नो यू हैव चोजन योर डेस्टिनेशन. दैट्स व्हाट यू आर अनश्योर कि मैं शायद एल्बम भी करूं, आई डोंट नो. सो हाउ डू यू सी दैट? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि मैंने जब भी अपने गोल्स या एम्बिशंस या अचीवमेंट्स की जो मैं चाहती हूँ अगर मैंने बात की है ना अपने आसपास के लोगों से, द फर्स्ट रिएक्शन इज़ लाइक यू ड्रीमिंग टू बिग. दैट्स okay, fair, okay, you can dream, it's your dream, you know, stuff like that, because I see myself at a very different place in my life, and that too very very soon. It sounds funny, it sounds unbelievable to a lot, but it is very very believable and very very real to me. It's not just about having that right belief, बट इट्स ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स इट. हम बस सोचेंगे कि हम शाहरुख खान बनेंगे तो नहीं होने वाला है. वी रियली हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट. आपको आपका क्राफ्ट बिल्ड करना है, आपको आपकी व्हेन इट कम्स टू मी, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन हाउ टू मेक माई प्रोडक्शन इवन बेटर, द क्वालिटी ऑफ वर्क, everything counts. And at the end of the day, if all of that is not making me a better human being, then there's no point. So it boils down to being a person that you are really really happy with. And जब goals और ambitions की बात आती है तो there is a lot that I see myself doing in the near future. And I've always said this कि मैंने तेलुगु से इसलिए शुरू किया अपना फिल्म का जर्नी because I wanted to explore, I wanted to see how it works around there.
मेरा कोई इंटेंशन नहीं था टू बिकम अ स्टार देयर एंड देन ट्राई हिंदी, ये सब थॉट्स थे ही नहीं. जब मैंने शुरू किया था तब तो देयर वर सो मेनी पीपल जस्ट ट्राइंग देयर लक कि तेलुगु में भी कुछ हो जाए. तब तेलुगु इंडस्ट्री वाज स्मॉलर देन तमिल, टू बी ऑनेस्ट, बट नाउ इट्स क्रेजी. एंड व्हाट आई मीन इज दैट मैंने कभी भी ऐसा कोई प्लान किया नहीं है, बट आई नो वेयर आई एम गोइंग. आई नो वन थिंग्स फॉर श्योर दैट जो भी मैं कर रही हूँ, चाहे वो आज की ये कॉन्वर्जेशन ही क्यों ना हो, इट इज़ टेकिंग मी समवेयर. एंड दैट honesty that I have with me, because there are so many things that I do and then I just feel like sometimes these things were not necessary. Sometimes one movie that you feel कि यार ये avoidable थी, इसकी this did not take away or bring in any value or anything, ये avoidable था. But then you realize कि नहीं, as a part of my experience this was important. This was important right now. Correct. अच्छा हुआ ये experience थोड़े साल बाद नहीं हुआ, because then it would be a step down. But अभी हो गया fair. I'm learning something. So my approach has been that way. And मैं अपने मम्मी पापा से भी जब बात करती हूँ ना अपने गोल्स के बारे में, and they are very practical people, they would also ask me if I'm saying no to something, because they believe कि काम आ रहा है, मना नहीं करना चाहिए. But there have been a lot of projects that I've said no to. Correct. So they keep they used to keep telling me that but it's good money, or but you know what, it would give you good exposure, it's a good hero, things like that. They are very practical. So I mean, after they realize that I see myself as something very different, up to my, even when I end up saying things like but it's good money and I'm feeling a little guilty about it, my father is like, तू कब से ये सोचने लग गई, छोड़. And that's the confidence they started showing in me. And that happened because मैंने जो ड्रीम्स देखे हैं, मैंने जो गोल्स देखे हैं, ये है, ये होना है और होने वाला है. Like I'm so sure about it that people around me have started to believe it. Like I remember when I used to have my meetings with my management and my PR and my teams, we used to sit and discuss कि यार, because I am very clear about certain things. I do not promote fairness creams, I do not promote any gaming apps, I do not promote alcohol, I do not promote things that I don't believe in. And we do lose out on a lot of money that way. We do end up not being brand faces, and we do end up losing out on a lot. Correct. But ये एक thought है कि नहीं करना है. I wouldn't be happy, dancing with a prop in my hand just to, show कि okay, this is what I'm using right now. I don't relate to things like that, which is why the part comes in where I believe that my uniqueness is what I add value to in a film. This is what I talk about, because अगर मैंने ये सब कर लिया, then I'm not unique enough. Correct. So I believe that the way I'm sticking to what my thoughts are, and maybe people might end up saying or feeling that it's arrogance or rigidity, I know it's not. I know it's coming from a very grateful heart. It is coming from a very aware heart who really wants to do big in life. And that's where I see myself. Great. So what do you think? How in this industry the so-called contacts and the relations work? They matter for sure. क्योंकि अगर वो contacts वाला situation नहीं होता, तो आज बहुत सारे लोग जो stars हैं वो stars नहीं होते. मेरे किस्से में I have been like really lost about the same thing, because मुझे नहीं समझ आता ये सब. I am not somebody who has gone and met a lot of people. मेरे को समझ ही नहीं आता. मुझे अगर कहाँ पे, मुझे एक तो ये नहीं समझ आता कि पार्टीज़ में जाके काम की बात हो रही है. मुझे ये लॉजिक ही नहीं समझ आता. एंड फॉर मी, आई हैव स्टेड अवे फ्रॉम all this years, and I feel that it's fine. So now I don't even do it. I don't even try. So I have been protected, I would say, from all of and that. secluded as well, even. Yeah, in a way, yes. And I believe कि जब कुछ होना होता है ना, हो जाता है. Like I remember COVID के time, I was just sitting in my house and I got a call from Vikram Bhatt, and that was for 1920. He didn't even ask me for an audition. He said, I believe in you. I just want you to be a part of the film. This is the story. If that can happen, then anything can happen. Yeah, correct. You're right. I never expected a call from somebody who is this experienced in this industry, making a big film, and
wants me to be a part of it. नहीं दिया ना मैंने कोई ऑडिशन, so जब तो होना है हुआ ना. Correct. And after that, even before the release or the result of that film, Mahesh ji is calling me and saying there's another script for you. Who will imagine things like that? Correct. So अगर मैंने ये प्लान किया भी होता तो भी ये नहीं होना था अगर नहीं होना था. So there is no Right. like there is no answer, like a clear answer to this कि relation कितने काम आते हैं क्या, क्योंकि मुझे तो मेरे सामने तो यही सब हुआ है, बहुत ही random चीज़ें. So my experience is something very different. But when it comes to the favoritism or the talk of the town nepotism, all these things are there in every industry. ये हर जगह है. ये आप, मेरी भी बेटी अगर मुझे बोलेगी एक्टिंग करना है, मैं क्यों मदद ना करूँ, मैं क्यों ना करूँ अपने हिस्से में जितना हो सके. इट्स फेयर. एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट ऑडियंस हमारी इतनी स्मार्ट है और इतनी उन्हें भी इतना प्यार है सिनेमा से कि जो अनडिजर्विंग है उन्हें वो प्लेटफॉर्म एक पॉइंट के बाद नहीं देते. दे आर अनफॉरगिविंग व्हेन इट कम्स टू दैट, यू नो. सो ये सारे टॉपिक्स जो है इन पे हमेशा बात करनी है. तो देयर विल बी अ साइड, देयर विल बी अ पार्ट विच यू नो, अ पार्ट ऑफ मी दैट विल कीप टेलिंग मी कि है तो सही ना. अगर मेरे पास भी कॉन्टैक्ट्स होते तो मैं भी गंगूबाई में होती ना. थिंग्स लाइक दैट. बट एट द एंड ऑफ द डे आई ऑल्सो बिलीव कि इफ़ इट हैज़ टू कम टू मी इट विल. सो मेरा वो बिलीव इसलिए इतना स्ट्रांग है क्योंकि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, जबकि मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को वो विक्रम भट्ट का कॉल नहीं गया है. So I understand that there is a different side to it completely, which will want to believe that ये सब चीज़ें important है, आपको बनाई रखनी है, because that's the kind of people you would want to work with. And 100%, now that I have worked with the Bhatts, I understand how they work. I understand the emotion and the deep input that they want from an actor. I can deliver. So I would want to work with them again. But Correct. when it comes to only working with them, तो फिर वो तो नहीं होने वाला. I'll be going around places. सही right? बात. आपके इंस्पिरेशंस कौन रहे हैं, यू नो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो अदर फील्ड्स हो? डू यू हैव एनी इंस्पिरेशन? बहुत सारे हैं. बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखी है मैंने. First being my mother. I think I have seen. So she was on the sets Balika में, ससुराल सिमरका में. She used to come with me most of my shoots earlier days. और उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया. She has always been a working woman. She has always helped my father with his businesses and all of that. But जब यहाँ पे आना शुरू हुआ, I realized how giving she was, and I realized कि that little sacrifice that she's thinking is actually a very big sacrifice. She was giving up on almost everything about her life to make something out of me. Correct. And I learned that sometimes if you're seeing the bigger picture, following it is very very important. I learned that from her. And उस सेट पे अपना टाइम वेस्ट ना हो इसलिए उन्होंने नेचुरोपैथी सीखी, वो डॉक्टर बनी. ये सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी है कि कुछ ना कुछ करते रहना है, सीखते रहना है. एंड दैट्स हाउ इट कम्स इन मी, यू नो. आई थिंक इट्स हर हु काइंड ऑफ मेक्स मी बिलीव दैट देयर इज़ नो, I shouldn't stop learning. I think that's what I learned from her. Then it's of course my father, because I've seen him keeping a smiling face चाहे वो कितना भी कुछ भी गड़बड़ चल रहा है लाइफ में. And that's what I learned. चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा होगा, मेरे सेट पे मेरे काम में कभी वो नहीं दिखेगा. Correct. And I think to me a lot of people ask that who are my role models when it comes to acting and when it comes to being a personality. The one name that you know comes to my mind सबसे पहले है शाहरुख खान. I believe that he is very 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 smart. I think the way he has taken care of his business, not just the acting part but everything around his name Shahrukh Khan, I think that it needs a lot of courage, that needs a lot of sacrifices, that needs a lot and a lot of patience. So I think that is what I learned from him. I learned from Priyanka Chopra that it's okay to experiment. She does everything and I love that about her. There is not one thing that she hasn't done, and you know, it's amazing how she can do it, and again with the amount of confidence she has. So these are some people that I really look up to, and of course then there are many directors that I have worked with and I learn a lot from them. And
ऐसे तो आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम यू ऑल्सो बिकॉज द काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव, it's something that I would really want to, you know, have in my life. I would love to start reading again because I realize that there is so much that there's so much of information that you can, you know, get, and it could help you in your life. So thank you for that. And that's the education I was talking about, because you have to be aware. Right. मतलब वो एक कहावत है ना कि भगवान ने बच्चे को दांत नहीं दिए तो उसने दूध दे दिया, जब उसने दांत दिए तो खाना भी वही देगा. सो एवरीथिंग हैज अ सेटअप, सो यू हैव टू कीप लर्निंग, यू नो. कितनी सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली है मुझे, बिकॉज यू नो सच अ यंग एज, यू नो, आप इतने बैलेंस तरीके से आपने अपने लाइफ को अभी तक जो भी किया. बिकॉज यू नो मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि हाउ डू यू हैंडल टाइप कास्टिंग, बट मुझे तो वो दिख ही नहीं रहा है क्योंकि आप टाइप कास्ट हुई नहीं. मेरा एक्चुअली मैं पूछना चाहता था, बट क्योंकि मैं आपकी जर्नी को जो मैं देख रहा हूँ उसमें मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि एक बच्ची बालिका वधू करने के बाद शायद उस तरीके के बहुत रोल ऑफ़र हुए होंगे, या उसके बाद ससुराल सिमर का करने के बाद कितने रोल मिले होंगे, या आप 1920 करने के बाद भी कितने आपको, बिकॉज यू नो समटाइम्स यू हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग, यू नो, एंड दैट इज़ समथिंग दैट ये वर्ड टाइपकास्ट ना निकल जाता है जब आप लर्न कर रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो. So that is what I have learned कि you know even you know we have to see कि हम एक दूसरे से सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मुझे I wanted to ask you that criticism को किस तरीके से, because criticism is something, you know, people don't take it positively, because सब लोगों को ज्ञान देना है ना बेसिकली. मतलब विराट कोहली ने अगर 15 साल वही चीज़ की है और पिछले 2 साल से नहीं कर रहा है, तो सब बैठे हैं ज्ञान देने के लिए, अरे ख़त्म हो गया यार, और वापस से 9 सेंचुरीज मार दी हैं तो अब अरे बाप रे विराट कोहली तो विराट कोहली है. सो क्रिटिसिज्म को ना किस तरीके से आप लेते हैं? यू मस्ट हैव क्रिटिसिज्म आपने भी झेला होगा, किस तरीके से आप यू हैंडल क्रिटिसिज्म? आई थिंक पीपल हैव बीन वेरी काइंड टू मी, क्योंकि आज तक अ लॉट ऑफ रिव्यूज अबाउट अ लॉट ऑफ वन मोर कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, यू हैव अ वेरी वेरी इनबॉर्न बिजनेस टैलेंट. यू नो यू आर वेरी very great business lady, right? I'm smart. Yeah, smart. I'm smart. I'm so clever. you know you handle criticism like that because you know everybody is so nice to me. No, I'll tell you what, it's actually a fact, क्योंकि बहुत सारी मेरी साउथ की मूवीज ऐसी थी जो बहुत सारी नहीं एक्चुअली कम ही है, बट जो क्रिटिसिज्म जिनको मिला जी, स्टोरी वाइज, किसी का म्यूजिक सही नहीं लगा, किसी की कॉमेडी बहुत you know it was falling flat. There were things like that written about a lot of my films, but all the reviews that I kept reading were about, but Avika gave her 100%, but Avika flourished, but Avika stood out. You know, when I read these things I realize that bias भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है अपने घर की बच्ची है. करेक्ट, हो सकता है bias, एब्सोल्युटली, बट अच्छा फीडबैक हो या बुरा फीडबैक हो या कुछ भी हो, आई डू नॉट टेक इट सीरियसली. चाहे मुझे कोई बोले कि आपने इस पर्टिकुलर फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है, आई लिसन टू इट, आई बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, बट दैट डजंट स्टे विथ मी कि अब तो मैंने कर लिया ना. आई डोंट गिव दैट सो मच इम्पोर्टेंस. तो इसीलिए जब मैं पॉजिटिव को इतना वो नहीं कर रही हूँ, अपनी लाइफ में वो पत्थर की लकीर नहीं मान रही हूँ, तो मैं नेगेटिव को क्यों मानूँ? दैट्स बिन द वे आई हैंडल थिंग्स. एंड व्हेन इट कम्स टू the trolls and everything that nowadays every other person on social media is ready to give, मुझे वहाँ पे भी I would say I've been very lucky, क्योंकि जब मैं बीच में बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी and I was not taking care of myself, and ऐसा कोई health issue तो था नहीं that I was, you know, जिसकी वजह से I was putting on weight. It was just me being lazy. And you know, in that phase also there were so many people on my Instagram messaging me personally, not even in the comments, but in personal messages they were telling things like कि I would have said the same thing to my daughter, I'm telling this to you, avoid sugar, do this, I think it will help. इतने प्यार से लोग अप्रोच करते हैं ना मुझे, कि मुझे फिर कैसे बुरा लगेगा इस चीज़ का. वो इनडायरेक्टली डेफिनेटली बोल रही है दैट डूड प्लीज लूज वेट, बट द वे ऑफ सेइंग इट इज सो नाइस, कैसे बुरा लगेगा मुझे. आई हैव बिन लाइक आई सेड कि, और अगर जहाँ पे अनवांटेड चीज़ें होती हैं, बिकॉज सोशल मीडिया पे कंट्रोल तो किसी का है नहीं. देर आर सो मैनी पीपल जस्ट यू नो सिटिंग अराउंड एंड फ्री इन देयर लाइफ दैट दे ट्राई टू मेस अप विद अदर पीपल सोशल मीडिया. देयर आर मेनी पीपल लाइक दैट.
सो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो बेस्ट है, जहाँ पे भी सोशल मीडिया वहाँ पे ब्लॉक करने का ऑप्शन है. व्हाट वाह. आई डू इज आई जस्ट सी दैट, आई डिलीटेड, ब्लॉक, रिस्ट्रिक्ट, खत्म. देयर आर लाइक जितने मेरे फॉलोअर्स हैं उसमें आई एम नॉट किडिंग, 5-10% तो ब्लॉक वाले हैं उसमें. मतलब अरे मैंने बाप उनमें हटा दिए वो ब्लॉक कर करके, बिकॉज I don't want that negativity. हाँ, I have so many things to do in life that I think that first I don't deserve it. Yeah. सेकेंड आई थिंक दैट वो मुझे एक तो बुरा लगता है उनके लिए कि सामने वाला उसके पास इतना टाइम है कि वो ये सब कर रहा है बेचारा. सो आई ऑलरेडी फील बैड. अब वो और टाइम वेस्ट मुझ पे ना करे, इसलिए मैं बस ब्लॉक कर देती हूँ. दैट्स द बेस्ट वे टू डील विद इट. सो अभी कभी रिसेंटली आईपीएल के फीवर में आपका एक रसल के साथ एक बहुत रसल द मसल के साथ आपका एक गाना आया है. हाउ डिड इट हैपन एंड हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है? सो पलाश जो है म्यूज़िक डायरेक्टर उस गाने का, वो मेरा बचपन का दोस्त है और हमने आज तक कभी साथ में काम नहीं किया. और सडनली उसका फ़ोन आया तो मुझे लगा टाइम पास कर रहा है, कुछ होगा नहीं, मिलने के लिए बुला रहा होगा. तो मैंने तो पहले सीरियसली लिया नहीं. देन इज़ लाइक, तू मुंबई में है क्या? आई सेड हाँ मैं मुंबई में. सो ना कल शूट करना है एंड वेरी अर्जेंट, राइट? सो आई सेड कल लेट मी फिगर आउट इफ आई एम फ्री, लाइक इफ आई हैव नो मीटिंग्स एनीथिंग वी कैन प्लान. और तब तक मैं सीरियसली नहीं ले रही थी. एंड देन ही सेड देयर इज़ अ सॉन्ग एंड आई हैव रिटन इट ऑफ कोर्स, एंड ये प्लान है, ऐसा कल एक ही दिन में करना है बिकॉज उसका फिर मैच है. किसका मैच है, क्या प्रैक्टिस, क्या बोल रहा है? सो देन ही मेंशन्ड हिज नेम एंड उसको तो कूल दिखाने के लिए ऑफ कोर्स आई वाज लाइक हाँ पता है कौन है एंड ऑल ऑफ दैट. आई हैड जीरो आइडिया. एंड उसके बाद मैं मैसेजेस पढ़ रही थी एंड आई लुक्ड एट माय फादर लाइक कौन है ये? एंड माय डैड इज लाइक डोंट टॉक टू मी गूगल, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू राइट नाउ. मेरे को सदमा दे रही है तो मेरे से बात मत कर. सो देन ऑब्वियसली आई अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम, गूगल एंड अ लॉट ऑफ स्टॉकिंग हु ही इज़. एंड आई रियलाइज्ड कि मुझे पता होना चाहिए था कौन है. बट एट द एंड ऑफ द डे फिर मैं गई और वो बहुत ही प्यारा शूट हुआ. एंड नोबडी आई थिंक ऑन द सेट वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू बी सो गुड with the dancing or yeah he was very good. And वो sportsman में वो होता है ना to just give whatever they're asked to do and give their 100%. And I think that showed, क्योंकि the minute he came on the set I remember everybody, सब क्रिकेट देखते हैं यार, सबको पता है वो कौन है. So everybody was like just starstruck of sorts. And then they saw me and again they were feeling the same emotion. And obviously because I've been on a set I know how to greet people or talk to them to make it all easy. So I was doing that and I realized he was doing the same just by looking at me, that meko bhi ye karna chahiye, it's easy. And all of those little things kind of made everybody comfortable and it was all fun. By the end we were talking about how crazy it is because he was wearing a lungi, he was dressed in a way he would otherwise never, and he was dancing so well that I ended up asking him ki have you like done this before? And he said, yeah, Shah Rukh makes us do all this. I said, that makes complete sense. So he loved the whole idea. And even after the song release, the response that we are getting, it's amazing. And even after that, when we spoke, even he's very excited and surprised with the response. Because यार उसको जब 2-3 चीज़ें बोली गई, जैसे कि मुझे उठा के टर्न करना है या मैं कमर ठुमका मार रही हूँ, वो अपना सर हिला रहा है, एंड all of that was very new to him. So he was every time looking at me and in a way asking that appropriate तो है ना ये मतलब. But I kept doing this कि हाँ it's normal, it's something that we do, it's normal. So, Caribbean yeah, flavor. Yeah. But he had a lot of fun. We had a lot of fun with him. Yeah, great. So tell us something, what are the future projects you're doing now? I'm working on Bloody Ishq, which is going to release very very soon with the Bhatts. And उसमें Vardhanpuri is with me. Exciting project because महेश जी और विक्रम जी को लगता है कि मुझसे वो ऐसे डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स करवा सकते हैं जो उन्हें खुद क्या बोलते हैं एक्सप्लेन करने में डिफ़िकल्ट ना लगे, बट वो हो बहुत कॉम्प्लेक्स. So I think they have found like a soft corner for me where I get to explore and as a performer give my 100%, and it's amazing to be on that set क्योंकि इतना कुछ सीखने मिलता है. विक्रम सर technically is one of the best person I know and
Mahesh ji, of course, the kind of depth and emotion that he brings in to the characters, it's just amazing to be there. And मुझे उस सेट पे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ओके टाइम हो गया मुझे घर जाना है. मेरा मन ही नहीं करता था घर जाने का. आई जस्ट वांटेड टू बी देयर. दे आर जस्ट सो अमेजिंग टू वर्क विद. सो दैट इज़ वन फिल्म दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. देयर इज दिस अनदर फिल्म Ugly Story which is releasing in Telugu very soon. That's again a thriller which is really performance oriented, and I think people have started to give me opportunities where I can just go all out. It's been happening since many years now, but recently काफ़ी मैंने ऐसे कैरेक्टर्स किए हैं जहाँ पे मैं खुद सरप्राइज हो गई हूँ करने के बाद कि मैं कर लिया. लाइक आई पुल्ड दिस ऑफ विच वॉज very difficult, but I did it. So I feel proud of myself because a lot of narrators that come up to me nowadays, they always have one common thing to say, and that is at your age, the experience and the maturity and the understanding of the character you bring in, we don't see anybody else even understanding a little bit of it. And when I hear that, मेरे को ऐसा लगता है that is my uniqueness and that is what I bring into the table. So it's amazing the kind of opportunities I'm getting. It's amazing the scripts I'm getting because मुझे खुद पढ़ के लगता है मैं कैसे करेगी, but it works and I'm so excited. Wish you all the best for your future so endeavors, and you keep entertaining people like that, and say something to your fan because they are the people जिनकी वजह से इतना सारा appreciation आपको मिलता है. Absolutely. I think people have really been really believing कि मैं उनकी घर की member हूँ, and that's how they love me. And every time I meet somebody, if there's an old auntie or somebody, they just come pull my cheeks and वो अपनापन feel होता है सबको मेरे साथ. And I think ये बहुत rare होता है connection अपने audience के साथ, and I'm very grateful for that. मैं नहीं चाहती कि वो आनंदी वाली इमेज आपके दिमाग से कभी भी निकले. रहने दो. I love it. Also, the kind of projects I have been doing, the experiments I have been doing, the production work, everything is very new to me. Everything comes as a surprise to me. And जब लोग मुझे वैसे एक्सपेरिमेंट्स करते हुए देखते हैं तो उनका जो बिलीफ है मुझ में कि मैं उन्हें एंटरटेन करूँगी वो बना रहता है, विच इज़ वाई द रेपूटेशन दैट आई हैव ऑफ रियली टेकिंग माई टाइम एंड चूजिंग स्क्रिप्ट्स वर्क्स. सो आई विल कीप डूइंग दैट. मुझे पता है कि ये मेरी इन अ वे रिस्पॉन्सिबिलिटी है to make sure that I don't disappoint you with the kind of films I do. So I will be taking care of that very carefully, and I will be aware of the kind of work I promote because I've been very conscious about choosing the right brands to promote, and also वहाँ पे भी I'm not going to disappoint you, and I'll be very careful. And thank you for all the love. Thank you for this opportunity, because speaking heart to heart and speaking openly about so many things, ये लोगों को देखने का भी मौका नहीं मिलता है. बहुत सारे लोगों ने ये अविका का साइड नहीं देखा है. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू बिकॉज people should also know that I can talk sense. People should also know that I'm not just वो बस ऐसा acting, dancing वही life नहीं है, और भी बहुत कुछ है. And really surprised to have so much of in this conversation I realized that you have so much to offer. And I'm so hopeful that even Friday Talkies also has some point of time work with you in future. Oh, lovely. That is something that we would like to say and state. Thank you very much. Of course. Thank you so much for coming here. Lovely meeting you. Thank you so much. Thank you so much. हाय नमस्ते, मैं हूँ अविका गौर और हम बात कर रहे हैं सूत्रधार शो पर, जिनके होस्ट है विनीत जी, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग सिनेमा हियर विद आवर लवली कॉन्वर्जेशन. सो प्लीज़ like and share this video, leave a comment, I would love to read them, and thank you so much for watching this. Do subscribe to Friday Talkies.